Yeah, Tushar, we can start this. Okay. Uh, everyone is requested to kindly mute themselves that we do not have any other interruption. And good afternoon, everybody. Today we are having the session 6 for Techneev. And as you all know, we'll be starting with a new theme today, energy access for a prosperous society. But before we log on to the day 6, we'll have a glimpse of the day 5, like how the day 5 was of Technique, which was organized on 12th January 2022. And it was an NIS session. As you all know that NIS is a National Innovation Foundation, and it supports the innovation at the grassroots level. जो नींव पे जो कम्युनिटी में हमारे इनोवेशन होते हैं उनको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिखाना और प्रमोट करना, वो एनआईएस का बेसिक एम रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन। और यही काम एनआईएस ने काफी लेवल पे किया, कम्युनिटी को बहुत फायदा हुआ उससे। वो इसलिए हमने डे 5 में एनआईएस स्पेशल रखा था, जिससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली कि कैसे अलग अलग लेवल पे उनको फायदा मिला था। तो हम वो डे को एक बार रिवाइज करेंगे कि कैसे रहा वो दिन। जो हमारा पहला कम्युनिटी ग्रुप था, मैम प्लीज चेंज द स्लाइड। या जो हमारा पहला कम्युनिटी ग्रुप था वो मणिपुर से था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि मणिपुर में एप्पल फार्मिंग एक अनकन्वेंशनल मेथड है, क्योंकि ठंडे रीजन में ही यूजुअली एप्पल सारे फार्मिंग होती है। लेकिन हमने देखा कि कैसे जो फार्मर्स थे मणिपुर के, वो जो सीजनल वेजिटेबल्स के थ्रू इतना नहीं इनकम उनका हो पा रहा था। लेकिन जब एनआईएफ का जो एप्पल फार्मिंग था, एक न्यू वेराइटी ऑफ एप्पल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया उस रीजन में, and there we had a information ki how it supported the farmers of the region, and financial support was the greatest. Along with there was a change in the shift of the community. Initially उनको लगा कि नहीं, शायद ये टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगा, बट फील्ड रिजल्ट जो थे उनको काफी इम्प्रेस करे, और हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब हुई कम्युनिटी में। और जो श्याम चंद्र जी थे हमारे मेन कम्युनिटी ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने बताया कि अब और फार्मर्स आ रहे हैं उन तक, ताकि वो सीख सकें उनसे। और जो उनके जो प्रोड्यूस होते हैं, जो एप्पल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके काम में, वो हाथों हाथ बिक जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कम्युनिटी ग्रुप था फॉर द सेशन वाज फ्रॉम छत्तीसगढ़। एंड जो हमारी सुनीता हल्दर जी थी, नेचर बॉडीज महिला स्वास्थ्य समेका समूह से, उन्होंने हमें बताया कि कैसे जो पहले कंपोस्टिंग वो किया करती थी एक रीजनल लेवल पे, नॉट एग्जैक्टली रीजनल लेवल बट एक लोकल लेवल। तो उन्होंने वो बताया कि कैसे वो एक टीडियस काम था, उनको एक टाइम लगता था, उनको ड्रजरी होती थी, उनको बहुत मेहनत लगती थी। तो इसलिए जो आसपास की महिलाएं जो उनके साथ जुड़ी थी समूह में, वो उसको नहीं अपना पा रही थी। लेकिन जब एनआईएफ की टीम उन तक पहुंची और उन्होंने देखा कि यहाँ पे उस इनोवेशन की जरूरत है, जो लीव ग्राइंडर एक टेक्नोलॉजी थी जिसका उनको जरूरत पड़ी, एंड उन्होंने ये हमने देखा कि कैसे वो टेक्नोलॉजी हमने देखा कि कैसे उसने लोगों की इजी कर दिया है लोगों की लाइफ को। और उन्होंने जो 3-4 मंथ में वो लोग किया करते थे, अब वो 1-2 दिन में ही मतलब उनका कंपोस्ट का जो बेसिक रॉ मटेरियल वाला काम है वो हो जाता है। एंड अब उनको इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्द ही उनका हो जाता है। निधि मैम, इज द इशू विद द पीपीटी? या थैंक यू, द प्रीवियस स्लाइड मैम। Nidhi ma'am, just the previous slide. Yeah, thank you. So, the third community group was from Nagaland. It was a border district in Nagaland. एक नागालैंड जो बर्मा बॉर्डर था उसके पास एक डिस्ट्रिक्ट है, नोकलाक डिस्ट्रिक्ट। और वो सोसाइटी मतलब वो जो कम्युनिटी थी वहां पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की काफी दिक्कत है उस एरिया में। तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत की वजह से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दिक्कत की वजह से, उनको उनके जो प्रोड्यूसर्स थे, जो रिसोर्सेज थी वहां पे, वो वेस्ट जा रहे थे। But with the help of NIF, they got a multi-food processing machine and many more innovations that they were handling, like sanitary pad napkin and all these things.
but these units that and they have launched 17 products with the same unit. तो जो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स, जो लोकल फार्मर के प्रोड्यूसर्स बेस्ड जा रहे थे, अब हमने देखा कि किस तरीके से वो एक फ्रूटफुल प्रोजेक्ट उनके सामने आया, जो कि ब्रांडिंग भी हो रही है, जो कि लोकल एरिया में तो बिक ही रहा है। इनफैक्ट वो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड में भी जा रहा है। इट इज एग्जिबिटेड इन द लाइक इन दिल्ली इन एग्जीबिशन एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल। एंड इनफैक्ट जैसे हमने देखा कि एक अमूल की स्टोरी है टेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे ही हमने देखा कि कैसे उन्होंने टेस्ट ऑफ नौकला सोसाइटी करके उनके नाम से एक सोसाइटी बनाई, और वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं जो टेस्ट है नौकला का, जो इंडिजीनियस क्रॉप्स हैं, जो वहाँ की लोकल क्रॉप्स हैं, जो लोकल फ्रूट्स हैं, उनके अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट बना के वो दुनिया तक लेके जा रहे हैं। ये था हमारा सेशन 1। अब सेशन 2 में हमने लास्ट बार देखा जो हमारे पहले कम्युनिटी चेंज मेकर थे, वो थे मिस्टर लैश राम फ्रॉम मणिपुर। एंड उन्होंने बताया कि कैसे इनिशियली उन्होंने एक रेजिस्टेंस देखा कम्युनिटी में कि यहाँ तो नहीं हो सकता एप्पल फार्मिंग। बट जब उन्होंने फील्ड रिजल्ट देखे, जब फार्मर्स ने देखा कि नहीं, एक पायलट टेस्ट में ये सही साबित हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत ले लिया, क्योंकि उनकी इनकम में बहुत फर्क आ रहा था। और एक पर्सनल इंटरेस्ट इन्होंने डाला कि ही इज इनिशियली फ्रॉम एनआईएस, बट उन्होंने एक पर्सनल इंटरेस्ट के कारण एक एफर्ट्स डाले, और आज हम उस एफर्ट्स का रिजल्ट देख पा रहे हैं कि मणिपुर में एप्पल फार्मर्स आर देयर एंड द एप्पल्स आर रीचिंग आउट टू द मार्केट्स इन इंडिया क्रॉस द नेशन। जो हमारे नेक्स्ट चेंज मेकर थी वो तो सुनीता हल्दर फ्रॉम छत्तीसगढ़। काइंडली चेंज द स्लाइड मैम। या थैंक यू। जो हमारी नेक्स्ट चेंज मेकर थी वो थी सुनीता हल्दर मैम। उन्होंने बताया कि इनिशियली जब वो एक लेवल पे अपने लोकल लेवल पे कंपोस्टिंग करती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि विमेन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको दिक्कत होता था, एक टाइम उनका लगता था, एक अमाउंट ऑफ हार्ड लेबर उनका जाता था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाते थे। तो एनआईएफ की टेक्नोलॉजी आई जिन्होंने लीव ग्राइंडर कंपोस्टिंग, और उन्होंने पूरा देखा कि किस तरीके से साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कम्युनिटी तक जा रही है, एंड दे आर नाउ इंटरेस्टेड टू टेक इट अप एंड टेक इट टू द मार्केट। तो ये हमने देखा। अब बहुत सारी महिलाएं, उन्होंने बोला कि इनिशियली उनके पास 2-3 महिलाएं थी, उनके पास 13 महिलाएं इस ग्रुप में आ चुकी। जो हमारी लास्ट चेंज मेकर थी डॉक्टर प्रीतपाल कौर फ्रॉम नागालैंड, शी इज एन आईपीएस ऑफिसर देयर। और हमने देखा कि कैसे जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो सिर्फ सोशल रोड ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने सोशल रोड ब्लॉक को सॉल्व किया, लेकिन साइंटिफिक सोल्यूशन के साथ किया, जिससे एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ काफी काफी डेवलपमेंट आया है सोसाइटी में, बहुत एक विचार में चेंज आया है कम्युनिटी में। और हमने देखा कि कैसे उन्होंने हर एक प्रॉब्लम का, उनके फ्रूट रिसोर्सेज वेस्ट होते थे, उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट मंगाई। उनके एरिया में विमेन को यूटीआई इन्फेक्शन होते थे, उन्होंने सैनिटरी पैड नैपकिन लेके आई। उनके एरिया में ड्रग एडिक्शन था, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया, रिहैबिलिटेशन दिया, और फार्मर्स को ट्रेनिंग दी। तो जो वहाँ पे टैलेंट एक वेस्ट हो रहा था, क्योंकि वो लोग कट ऑफ थे फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन अब उनका काफी अच्छा हो पा रहा था, वो टैलेंट यूज हो पा रहा था, वो रिसोर्सेज यूज हो पा रहे थे, और अब दे आर अर्निंग फ्रॉम दैम। एंड मतलब वो जो चीजें, जो एक पलायन वहाँ पे हो रहा था, जो माइग्रेशन हो रहा था, सब लोग छोड़ के जा रहे थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे अपने बच्चों को, लेकिन अब वो सारा मनी उनके तक डायरेक्ट हो रहा है, और एक फॉर्च्यून है अब एक एज अ सिटी, एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेशन, जो हमारा लास्ट डे था, डे 5। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लिए, डे 6 के लिए। तो सेशन 1 में हमारे पास 3 कम्युनिटी ग्रुप्स हैं। पहला कम्युनिटी ग्रुप है हमारा किशनगंज राजस्थान से, जो सोलर एनर्जी पे काम बात करेंगे और बताएंगे हमें कि किस तरीके से उनकी लाइफ में फर्क आया है। तो हमारे पास हैं बेयरफुट कॉलेज से पूनम जी, बेयरफुट कॉलेज से हैं हमारे साथ। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हाँ, अब? हाँ जी, मैं बेयरफुट कॉलेज नमस्कार से आपका। बात कर रहा हूँ। जी जी सर, जी सर।
हाँ, आवाज आ रही है क्लियर? आप हाँ जी सर, आपकी आवाज आ हाँ, रही है। तो आप सबका जी, आपका स्वागत है लीला देवी जी और जैतन बानू जी हाँ हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते, मेरा नाम है जन्नत बानो, सड़ावता सेंटर से। सड़ावता सेंटर से नमस्ते। नमस्ते जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बेयरफुट कॉलेज से जुड़े और आपने एक टेक्नोलॉजी सीखी, तो हाँ, वो टेक्नोलॉजी आप तक पहुंची कि आप टेक्नोलॉजी तक पहुंचे? वो क्या परेशानी थी जो जो आपको इस टेक्नोलॉजी तक लेके आए? पहले वो परेशानी थी, वही दूर दूर गांवों में जाते थे। फिर ये वर्कशॉप खोला और 4 पैनल लगाए, बैटरी लगाई, जी वो IoT चार्जर लगाने के बाद में पूरा डाटा देख सकते हैं, वहाँ पे सर्किट चार्जर कर सकते हैं और वहाँ रिपेयरिंग कर सकते हैं। गांव में वर्कशॉप खुल के वहाँ काम कर सकते हैं। तो आपको दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी की थी कि दिक्कत जो आपके कम्युनिटी में आप लोग देख रहे थे, वो दिक्कत क्या थी जिससे हमने एक सोल्यूशन दिया ना, एक सोलर एनर्जी के थ्रू आपको कुछ फायदा हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपके चल रहे होंगे या काफी चीजें हैं जो आपको फायदा हो रहा है। तो वो हाँ, चीज मतलब तो आपने पहले आपने पहले जी बताइए। हेल्थ सेंटर में जाके काम करते थे, परेशानी होती थी। अब ये खोलने के बाद में, वर्कशॉप खोलने के बाद में गांव में ही रिपेयरिंग कर लेते हैं और गांव में ही है काम कर लेते। 4 पैनल अच्छा, तो काफी और 3 जी बैटरी और ये डिस्ट्रिक वो IoT चार्जर लगाने के बाद में पूरा डाटा देख सकते हैं, फोन से भी लैपटॉप से भी देख सकते हैं। तो इसको लाभ मिला हमको। तो डेटा देखने से आपको किस तरीके से आर्थिक मदद मिली कि आपको एक सामाजिक मदद मिली? आपको किस तरीके की सोलर मदद? की बचत हो गई, समय की बचत हो गई, समय की बचत हो गई हमको। अच्छा, समय की बचत हो गई है और एक आर्थिक लेवल पे आपका कोई योगदान रहा है इस टेक्नोलॉजी का आपके लाइफ में? हाँ, अच्छा सीखा। एग्जैक्टली आप हमें समझा पाएंगे कि मतलब इससे आपको किस तरीके से समय की बचत हुई? मतलब आप पहले कितना टाइम लगता था और अब कितना कम टाइम लगता है, उस तरीके से अगर पहले बताएं वहाँ तो। घरों पे जाके आना पड़ता था, फिर लैंप लेके आते थे, फिर वहाँ सहायता सेंटर जाते, फिर वहाँ से काम करके वापिस आते, फिर वापिस जाते, 3 दिन लगते थे। और अब तुरंत जाके संभाल के वहाँ पे रिपेयरिंग करके वापिस ले आते, वापिस लगा देते वहाँ वर्कशॉप से। तो अभी केवल आप ही कर रहे हैं क्या आपके साथ और भी महिलाएं जुड़ी? एक लीला जी। नमस्ते, मेरा नाम लीला है। बताओ, IoT चार्ज कंट्रोल से क्या फायदा हुआ? IoT चार्जर कंट्रोल काम में ले रहे हैं बार। हमें इससे ऐसे एक फायदा हुआ कि मैं घर बैठे ही उससे देख सकते हैं क्या चीज खराब है या क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती। मोबाइल से भी देख सकते हैं। बैटरी खराब है या बैटरी खराब है या पैनल खराब है, चार्जर कंट्रोल किसी भी चीज की खराबी हो तो मैं घर बैठे देख सकती हूँ। वो पहले भी आप करते थे लेकिन इसने आपकी समय की बचत कर दी और आपको अब हर जगह नहीं जाना पड़ता वो चीज देखने के लिए। तो हाँ, एक हाँ, दर्जी रिडक्शन भी हुआ है। इसके अलावा हम ये पूछना चाहेंगे कि आपको जैसे ये टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको एक इनिशियल लेवल पे उसको एक्सेप्ट करने में पहले आप जाते थे, उसको देख पाते थे, अब उसे हाँ, आप सब लैपटॉप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो कितना आपको लगा कि आपको दिक्कत आई इसको अपनाने में? कितनी दिक्कत आई इस टेक्नोलॉजी? कुछ दिक्कत नहीं, इजी लगा? इजी लगा। इजी लगा। हाँ, ये इजी तो शायद मुझे लगता है कि मैडम बेयरफुट कॉलेज या मैडम मैं कैसी मुमताज इजी? बोल रही हूँ और जी मैं जी मास्टर टीचर हूँ, यहाँ सिखाती हूँ और यहीं सोलर में मैं काम कर रही हूँ। तो ये जो REW कनेक्ट जो हमने वर्कशॉप खोला है, ये हम गांव में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हमने होम लाइटिंग सिस्टम जो लगाए थे, वो एक फैमिली के लिए एक सिस्टम लगाया जाता है जिसमें 4 लैंप, एक बैटरी, एक पैनल, ये हम लगाते हैं।
और वहाँ उसके लिए हम 100 घरों के लिए एक हम REW कनेक्शन ये वर्कशॉप लगाते हैं। वहाँ एक टेबल होता है और हमारे पावर सप्लाई होता है, हमारे टूल्स होते हैं और आयरन होता है, जिससे हमारे उस सिस्टम में कहीं खराबी हो जाए तो हम आयरन के द्वारा, हम पावर सप्लाई के द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें कंपनियों में कहीं भेजना नहीं पड़े और हम खुद उसको रिपेयर कर सकें। तो इसके लिए हमने ये REW वर्कशॉप खोला है, उसका हमने सीखा है और हम खुद रिपेयर करते हैं। हाँ जी, तो आप हमें बताएंगे कि जैसे आप टीचर हैं, आप उनको सिखाते जी हैं कि ये चीजें कैसे जी करना है, तो लोगों को इनिशियली इसे एक्सेप्ट करने में कितनी दिक्कत आई, या फिर उन्होंने खुशी-खुशी इस चीज को सीख नहीं, लिया, उन्होंने या फिर खुशी-खुशी अपनाया, क्योंकि गाँव में लाइट का प्रॉब्लम होता था, वहाँ दिया वो जलाना, मोमबत्ती खरीदना और उसमें केरोसिन जलाना, उसमें काफ़ी खर्चा होता था। अब ये हमें सूर्य के द्वारा, हम ये सूर्य ऊर्जा के द्वारा हम ये जो सिस्टम काम में ले रहे हैं, तो उससे हमें फ़ायदा हुआ है और सब लोगों ने गाँव में अपनाया है। तो एजुकेशन तो मुझे लगता है कि इस रीजन की बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो उनको टेक्निकली जी। सिखाने में कभी टेक्निकली आई हम है? सिखाते हैं, इसमें हमें एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। गाँव में जो ये हमारे ट्रेनीज़ आते हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ भी इस काम को सीख के गए हैं और वो अभी कर रहे हैं। जैसे जन्नत जी हैं, इन्होंने 300 सिस्टम लगा चुके हैं ये, और ये खुद रिपेयर करते हैं और वहाँ काम कर रहे हैं सोलावता में। और प्रैक्टिकल के और द्वारा हम ज़्यादा सिखाते हैं, काम हम हाँ करके जी, आप दिखाते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल के द्वारा। प्रैक्टिकल जी, जी जी। इसमें पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं है। और इनको बेसिकली कोई भी टेक्नोलॉजी खरीदनी नहीं पड़ती, या फिर कोई भी मशीनरी खरीदनी नहीं पड़ती इन सब जी, के जी, लिए? नहीं। हम ये हमारा सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने कई जगह लगाया है। हम देश-विदेश में भी हमारा ये जो REW का वर्कशॉप चल रहा है और वहाँ भी हम ये काम कर रहे हैं। तो ये जो IoT जो हमारा नया चार्जर आया है, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिला है कि हम मोबाइल के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम, बैटरी, पैनल, अ, ये चार्ज कंट्रोलर, इसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि हमारा काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। पहले हमें जाना पड़ता था, समय भी ज़्यादा लगता था। अब हम घर बैठे, ऑफ़िस में बैठे हम देख सकते हैं कहाँ हमारा सिस्टम सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इससे हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। एक तरीके से आप इनका स्किल एनहांसमेंट कर रही हैं, एक स्किल जी उनको हाँ, दे रही हैं। जी। हाँ जी, तो क्या आप इनको कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी देते हैं? मतलब अगर इन्होंने कोई एक स्किल सीखी है कि तो ये कहीं और जाके करना चाहें, तो ये इनके पास क्या रहेगा अदर देन द स्किल, कि हाँ, हमें ये चीज़ें आती हैं? ये प्रैक्टिकली सीखा अभी हुआ से हमारा अपने से काम। जी, हम अभी सर्टिफ़िकेट के तौर पे तो कुछ ऐसा देते नहीं हैं, लेकिन हमारा प्रैक्टिकली काम आता है कि हमने कितना सीखा है और कितना हम कर पाते हैं काम को, और हमने करके गाँव में दिखाया है और कर रहे हैं। से तो अभी आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जिस तरीके से ट्रेनिंग चल रही है, उसको और क्या बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि लोग जी, आपको आके बताते होंगे कि हाँ, हमें ये दिक्कत है, या फिर हमें इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है, आप हमें इसका सॉल्यूशन दे दीजिए, या फिर हमसे जी। ये नहीं आ पा रहा है। तो आप क्या एक प्रोसेस में, या फिर कहीं भी किसी भी लेवल पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, या क्या आपका फीडबैक क्या रहा? या क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? दिक्कत यही है कि जैसे सिस्टम हम लगाते हैं तो जाने-आने का खर्चा और वो जो उनको वो टाइम पे पैसा नहीं दे पाते हैं, या हमारा ये इसी में थोड़ा बहुत आता है प्रॉब्लम, और तो ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आया नहीं। मैनेजमेंट लेवल पे ही दिक्कत जी, है, बाकी जी, जी। तो धन्यवाद आपको हमारा ये अपने सजेशंस रखने के लिए, और हमें बताने के लिए कि हाँ, टेक्नोलॉजी ग्रुप तक पहुँची है, एक स्किल एनहांसमेंट हुआ है, उनका टाइम भी बचा है, उनका हार्ड वर्क भी बचा है, और अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में, एक जी, गाँव में जहाँ पे एक बत्ती के नीचे, एक लाइट के नीचे काम करना जितना मुश्किल रहा है, वो तो हम सब जानते ही हैं, और किस तरीके से वो आसानी से पहुँच रही हैं चीज़ें सोसाइटी तक। तो हम तक वो चीज़ लाने के लिए धन्यवाद। आप रहिएगा, हम सेशन 2 में जो कॉन्क्लेव ऑफ सोशल चेंज मेकर्स है, हम वहाँ तक आएँगे आप तक। और अगर आप में से कोई भी, लीला जी, जन्नत जी, या फिर कोई भी अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहता है, तो यू आर वेरी वेलकम। Okay, ma'am. थैंक यू। Thank you.
जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अब हम अपने नेक्स्ट कम्युनिटी ग्रुप का वेलकम करेंगे। विल वेलकम द कम्युनिटी ग्रुप फ्रॉम लक्षद्वीप। सर, कैन यू हियर अस? Yes, ma'am. Yes. So we would like to communicate with the community group there. Ma'am, I want to take 30 seconds, ma'am. I am Askar, District Collector Lakshadweep. Here, our panchayat representatives are also here, and they are planning to talk about this low temperature thermal desalination plant. And with this, sea water is converted into drinkable water, potable water for the islanders. So right now it is functional in 3 islands. Another 6 islands we are planning for it. So in Lakshadweep, we have 10 inhabited islands. So out of 10, we are going to have the facilities in 9 islands. It's very cost effective. And we are using an indigenous technology which was developed by NIOT, which is for, autonomous body under Ministry of Arts Sciences. So you can ask Yes. the panchayat representatives, so they will explain to you how it is very useful, because this is basically the only source for drinking water in the islands. Okay, okay, sir, sure, sir. So, sir, are they comfortable in English and the both, or likewise, what will the comfortable language exactly? The English would be They will comfortable with them. with Hindi as well as English. Hindi. Okay, okay, sir. So, can we have the formal introduction of these members, sir? Myself, Hassan B. Hassan, Pradesh Council President. Jilla He is the Panchayat. chairperson of District Jilla Panchayat, Panchayat. Hassan Bodunka Bodunka. Okay, okay, okay. Welcome, Hassan, sir. And you must have known what exactly we are talking about. We are talking about how the technology that is developed by the country's brightest minds, scientists across the nation. So how are they benefiting you, and what else needs to be done? So we need to get the feedback from you exactly in that way. So just tell me how the technology that you are using for like this thermal desalination plant, how it has helped you, and what was the basic problem that was being faced by you. Good afternoon. ये Good afternoon. डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुआ था, कवरत्ती में फर्स्ट शुरू हुआ है 2005 में, और उसके बाद 2011 में मिनिको एंड अगति से किया हुआ है। यहाँ के लोग के लिए सबसे अहम तो ये ड्रिंकिंग वाटर है। हमारा ग्राउंड से पोल्यूटेड वाटर मिलता है, पीने के लिए लायक नहीं होता है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। अभी भी चल रहा है, 2-3 आइलैंड में बहुत पक्का चल रहा है, फिर भी समटाइम्स ये थोड़ा रिपेयरिंग आ जाता है, वही टीम हमारे लिए दिक्कत बढ़ जाता है। और दूसरा चीज, अभी हमारा ये सब स्ट्रीट में रोड में लगा हुआ है टैप। अभी हमारा रिक्वेस्ट यही है, हर एक हाउस होल्ड में रख पाएगा तो बेहतर रहेगा। वो टाइम बाउंड के माध्यम में टाइम बाउंड देके इश्यू करने का है वाटर। तो पहले भी पानी का कुछ तो इंतजाम रहता होगा इस टेक्नोलॉजी के आने से पहले, तो उसमें वो जो भी तरीका मेथड आप यूज करते थे, उसमें और इस टेक्नोलॉजी में आपको क्या फर्क मिला, और क्या फायदा हुआ बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से? बहुत बहुत फर्क हुआ है, क्योंकि पहले हम ग्राउंड वाटर पीते थे, उसके वजह से कई तरह की बीमारी फैल हो जाता है। अभी आजकल ये ज्यादातर हमारे 3 आइलैंड में ये डिसैलिनेशन वाटर तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सब कम हो रहा है, ये बीमारी कम होता है, और ये बहुत अच्छा पानी भी मिलता है हर एक जगह। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपका कैमरा अगर आप ऑन कर सके तो। हमारा ये प्रोग्राम लाइव भी जा रहा है, तो देश को पता चलना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी फ्रॉम NIOT, एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की टेक्नोलॉजी, एक सर, अगर इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर कैमरा भी ऑन हो सके तो। Yes, ma'am, we are doing it. ओके ओके ओके। Disconnected eyes. तो सर, हाँ जी, कोई नहीं सर, इतने हम हसन जी से बात करना कंटिन्यू करते हैं। तो सर, किस हद तक अभी आपने बताया कि एक टैप वाटर जो है कम्युनिटी लेवल पे आपने इंस्टॉल कर दी है,
तो जितना भी ये प्रोसेस रहता है टेक्नोलॉजी का, उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, और उनको कितना टेक्नोलॉजी से अवगत है वो, या फिर वो सिर्फ एक ऊपर फॉर्मल इंफॉर्मेशन है उनकी कि हाँ ये ऐसा करना है, इसको ऐसा करना है, लेकिन कितना टेक्नोलॉजी अंदर तक जा पाई है कम्युनिटी तक, ये हम जान। ज्यादातर लोग को यहाँ जानकारी है इसके टेक्नोलॉजी के बारे में, बहुत पता है यहाँ के लोग के लिए। और दूसरा हमारा कहना यही चाहता हूँ, और यहाँ ये 3 आइलैंड में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं ये लोग, टेक्निकल बातें ये सब जानते हैं। और तीसरा बात ये, दूसरा आइलैंड में अभी मेरे ख्याल से 6 आइलैंड में ना वर्क गोइंग ऑन, तो थोड़ा स्पीड अप करना हमारा रिक्वेस्ट, तो ये थोड़ा स्पीड अप करने का है, दूसरा आइलैंड लोग भी ये इस्तेमाल कर पाएंगे। और यहाँ भी हाँ जी। दो हमारे ये दूसरा एक फाउंडेशन चुन रखा था, ये डॉक्टर हर्षवर्धन आके रखा था और वो भी कितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है, क्योंकि कवरती में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है पानी का। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सर, ये आप तक NIOT के लोग खुद आए कि आपने अपने PWD ऑफिस से या फिर कहीं भी किसी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को आपने खुद कांटेक्ट करा कि हमें पानी में दिक्कत है, तो आप हमारे लिए कुछ एक तरीका ला दीजिए, कोई सोल्यूशन ला दीजिए, ये रहा प्रोसेस आपका टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का, कि NIOT या फिर ऊपर से ये टेक्नोलॉजी आप तक पहुंच? यस, NIOT ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ के लिए, वो विजिट भी बहुत बार कर चुका है, यहाँ साइंटिस्ट भी आ रहा है, वो सब आके ये देख के बहुत टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है ये सब। और दूसरा बात ये अभी मेरे ख्याल से ये कोरोना का वजह से होगा, ये दूसरा आइलैंड में ये वर्क तो थोड़ा स्लो है, वो स्पीड अप करके सभी आइलैंड में देना जरूरी है, क्योंकि ये NIOT ये बहुत बढ़िया काम किया है लक्षद्वीप के लिए। हाँ जी। अच्छा, और जैसे कि टेक्नोलॉजी या मशीनरी, जो भी आपका एक मशीनरी का सेट होगा, तो क्या वो इंफॉर्मेशन है आप मतलब कम्युनिटी में कि इसको रिपेयर कैसे करना है, या फिर इसको मेंटेन कैसे करना है, या फिर किस हद तक उसको किस तरीके से यूज करना है कि उसका डिग्रेडेशन ना हो? जानकारी में है, कम्युनिटी में जानकारी है इसके बारे में, और हम बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये PWD डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करते हैं, वो सब जानकारी है उसके बारे में। और रिपेयरिंग और टाइम पर रिपेयरिंग का जरूरत होता है, ये थोड़ा मोटर रिपेयरिंग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसका ये हाँ मशीनरी जी। का ये प्रॉब्लम, मशीन है ना वो, मोटर वगैरह वगैरह। ठीक। जो आप बता रहे हैं कि रिपेयरिंग में की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन अवेलेबल कराता है, या फिर कम्युनिटी के लोग खुद ही उस चीज को इतने अच्छे से जान गए हैं कि वो खुद ही उस चीज का सोल्यूशन कर लेते खुद ही जाके कलेक्ट करते हैं, या हमारे रोड साइड में ये सभी टैप लगाया हुआ है, वो ब्लॉक होएगा तो वो सम्प में जाके भी थोड़ा लेते हैं, मेन सम्प है ना ये हैं? मतलब पंपिंग एरिया, वहां भी स्टॉक करते हैं, वहां भी जाके लोकल लोग तो ले रहा है, ये ब्रेक होएगा तो। ठीक है, कम्युनिटी खुद ही से अवेयर है कि उस चीज को, अगर उस टेक्नोलॉजी को कैसे रखना है, हाँ, हाउ टू मेंटेन दैट एंड हाउ टू रिपेयर दैट। जी यस, सर। इसके और बारे में जानकारी है, वो रिपेयरिंग भी ये मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है, और वो हो नहीं गया तो ये दूसरा ये NIOT वाले आके वो कर देते हैं, कोई मेजर होएगा तो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है मेजर तो। तुषा जी जी। तुषा वी वुड आल्सो लाइक टू नो कि कितने डिसैलिनेशन प्लांट हैं आइलैंड पे। Then हाँ I जी just सर। want to answer with your permission. Actually, हाँ we जी have सर। 10 inhabited islands. We have 10 inhabited islands where there are local populations, local residents. Out of 10, in one island we have RO plant, normal RO plant, reverse osmosis based plant. And in another 9 islands, out of remaining 9 islands, 3 are functional right now. Desalination plants are functional in 3 islands right now. And in another 6 islands, within 4 or 5 months, all will be made functional. So that means for 9 islands, we have done the arrangement. For 3 islands already functional, 6 islands, it will be made functional within 4 or 5 months. And if you see the capacity, the earlier 3 islands, we have the capacity of 1 lakh liter per day. Here, there are only 3 sources. One is groundwater, one is rainwater, one is this desalination plant, water from the desalination plant. The only challenge right now we are having is 2.
One, there are no minerals in this desalination water because it converts directly into sea water, into fresh water, which is distributed to the locals, but we are yet to add minerals. So we are planning to add minerals, number one. Number two, we are not providing to household. With the vision of the Honorable Prime Minister to provide to each and every household, we have started the work under Kavarati Smart City also. We are planning to provide to each and every household. Now what we do is we provide to the community at various places and for specific period of time. So what we want right now is we want to provide to each and every household, for which work has already been initiated. Technology wise, if you see the cost effectiveness per liter, it costs only 30 paise, basically 29 paise. So it's very cost effective. And right now it is maintained by the local PWD. So only one staff can manage it. It is very cost effective. And here, because of the location, because of the island conditions, it is quite feasible because you are getting the temperature difference of around 12 degrees Celsius between the the surface water as well as around 400 meter. So that because of the temperature difference, the technology is very simple. Surface water, warm water, it is made to evaporate at low pressure, and with the cold water from deep down inside, you are condensing it. So out of 100 liters you are pumping, you are converting into 1 liter. So 99 liters goes to the sea water, and environmentally that brine solution is too less, it is negligible. So technology wise, it is very much feasible, environmentally sustainable, and maintenance wise, it is very easy, and it lasts around 30 years, minimum 30 years. So in that sense, it's the best suited technology for the islanders. And for the, as I told you about the challenges, they are planning to settle it. They are going to provide water to each and every household. Sir, continuing to your answer, I would like to ask, there are many tribal pockets also there. So these desalination plant, do they cater to the tribal population also? Here, population is almost 100% tribal population. So the population is around 70,000. So all are getting this. All are going to get this desalination water. So now also there is no discrimination. It's the same. So all are getting this desalination water right now in 3 islands. For another 6 islands, as I told you, within 4 or 5 months, it is going to be made operational. Okay, sir. So, any suggestions that would you like to give us for improving the process, or like any major roadblocks that you face in the administrative level, or like at any level? It could be the technical issues, could be anything. So, any major roadblocks and like suggestions for improving the process, sir? Now there is what we so far we are yet to add this minerals in this desalination water. That is one suggestion we have been told to. NIOT has been told also to explore the possibilities how to add minerals in this desalination water. Second, like suppose in mainland, if commercial exploitation, if it is possible, then we can start thinking on that line. Because mainland, especially Chennai, Tamil Nadu, where there is shortage of water, because sea water here it is abundance and it is environment friendly, and it is very cost effective. So for future commercial exploitation, if it is possible or not, then we can check. And third thing, as I told you, suggestion is how to reach to each and every household. That is our challenge, which we are working on. Okay, sir. We hope that like the process that you have taken up, you are very moving in a fast speed. So the process may flourish and you reach each and every household, as is the vision of our Honorable Prime Minister. So kudos to your work, and keep moving in the direction. Although like everyone, including the ministry and all, are there for the community, because the major initiative that we take are for the community only. So thank you for your for the interaction, and like we will move on to the third group. That is Manini SSG from Bangalore. Um, Yeah, hi, thank you. yeah. Thank you. So, Manini SH Group is in a village called Arlaguppe in Tumkur. So, before I introduce them, I will introduce our group. I'm Sumati from an NGO called Technology Informatics Design Endeavor, which is in Bangalore. We are a 28-year-old organization.
and we deploy science and technology solutions. Particularly, we have been working in biomass energy access and biomass-based livelihoods, and we have been promoting livelihoods based on innovative ideas, energy-based ideas. And we had set up a women's technology park, what is called as a WTP, with the support of Department of Science and Technology. This was done in 2012. And we are very happy to say that we are one of the few NGOs where the WTP is still functioning even after the project is officially over. It is a self-sustaining model to a large extent. And it is our hub for doing a lot of training and production also. So Manini is actually a child of WTP, one of the very first successful efforts in WTP. And today we have two women representing Manini, Pushpa and Shashikala, who will talk to you about their experience in creating value-added millet products. The background is that Karnataka has a lot of millet products, which is rain-fed, and it is also used as intercropping. And they will give you the background, so I will not tell much now. We also have our field person, Mr. Manjunath, sitting there. So they are actually at our WTP. The room that you see is our WTP. So they will talk in Kannada. So we thought that maybe they can first talk and then I can translate. Does that work? Then I can take your questions back to them. Yeah? Okay. Okay. Yeah. Okay. Pushpa, Shashikala, namaskara. Thank you for the kind introduction of Women Technology Park, ma'am. Actually, as all know that Vigyan Prasad is also conducting a study on Women Technology Park. So it was a nice study, like a nice scheme it is of the Department of Science and Technology, and we are happy that a success story from the WTP is represented on a national platform. So we would firstly like to hear from them, and then we'll have the question. Thank you so much. Pushpa, Shashikala, ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಶಿಕಲಾ. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಮಾನಿನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ. ನಾನು ಮಾನಿನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. Okay. Manjunath, you want to translate? You want to do that? Please do. No, okay. So she's Shashikala. She is the representative of Manini Self-Help Group. Yeah, ಹೇಳಿ Shashikala. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪ, ನಾನು ಮಾಲಿನಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ. Yeah, Pushpa. This is Pushpa. Yeah, go ahead. ಟೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಟೈಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಡ್ WTP ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So she got to know about TIDE through the awareness programs that TIDE conducted in their villages when WTP was set up and we started reaching out to them. Yeah. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಗಿ ರೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, 3000 ಇದೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಗಿಯನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So she is from a place where ragi is grown extensively. So they typically get about 3,000 rupees per quintal for the ragi grain. And here she is going to talk about how they convert that ragi to a value-added product. ಹೇಳಿ ಶಶಿಕಲಾ. ಮಾನಿನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ತರ ಅದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಕ ರಾಗಿ
ಹುರಿದು ಬಟರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yeah, they are making various ragi products, which is the ragi butter biscuits and ragi flour, popped flour, and other snacks out of ragi. So that is what they are making. Shashikala, ನೀವು ಇದು ಹೇಳಿ ಟೈಟ್ ಬಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅದು ಓವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್? So can you ask them to talk about the production, what training and how instrument oven they are using for the production and recipe, various recipe for urban market, rural market and all of that? Hey Shashikala. ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಕರಿ ಓವನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು LPG ಓವನ್ ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇದಲ್ವಾ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಬಟರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಡಾಲ್ಡಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. Okay. So basically, Tide has designed a biomass oven. So she's telling that they use the biomass oven. If the orders are more, they use LPG oven also. And we have helped them to develop different recipes for urban and rural market, because urban requires jaggery and ghee, and rural will require different taste. So that's what she's talking about. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿಕಲಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಅದು ಮಾಡಿದಿರಾ, ಫುಲ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ದಿನಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಬಟರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ಜಾಂಗ್ರಿ, ಬಟರು, ಕರ್ಸು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇಪ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಕರಿ ಓವನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೈಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಲೇಬಲ್ ಇದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. FSSAI ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸಿರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿದೆ. Okay. So basically, they are talking about the ingredients and the process that they follow in biomass bakery oven. They have given a name also. We had initially one name called Manini, but it was across various products, biscuits, mask, everything. So the women said that no, we want a separate name for biscuits. So recently they discussed amongst themselves. They came up with the name Siri. Dabbagalidante ಸ್ವಲ್ಪ you can show the dabba, Manjunath, various packaging. You can show the different boxes that you have while they are talking. ಪುಷ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ WTP ಕಡೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. Okay, she is talking about the marketing linkages. So basically within the group, some women take care of procurement, some women take care of packaging, labeling, some women take care of marketing. So she is saying that we gave them linkages to schools. Then now NABARD has sanctioned a rural mart for them. She's talking about that, from where they are selling the biscuits. We have also set up one e-commerce website for them called tidemanini.com. So we receive orders. Sometimes during the festival, corporates and all are facing orders. Due to COVID, that has come down a little bit, but at least the years before it was good. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಇದು ಯಾವ್ದು, ಇದು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪುಷ್ಪ, ಶಶಿಕಲಾ, ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಬಟರ್ ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ನೆಟ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್? ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Are you able to hear them? I'm losing connection. Yes, ma'am. There is a
block. I think the roadblock there. Yeah, there is a freezing Yeah. there because it's a very Yes, remote place. Yeah, it's a remote yes, place. we can absolutely take it out because there was a train that went nearby to them. Yeah, yeah, it's Basically, just there's- behind that is Araliguppe. Yeah. I think they're coming back. Manjuನಾಥ್ ಸರ್ ಇದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಟರ್ ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿರಿ ಬ್ರಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಇದು ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿರಿ ಬ್ರಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗ, ಎದು ರೂರಲ್ ಎದು ಅರ್ಬನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಅದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗರಿ ಇದೆಯಾ, ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆಯಾ, ಜಾಗರಿ ಇದೆಯಾ? ಜಾಗರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ. Okay, yeah. So that is the packets that we have developed for them. It has Kannada label and English label also. We have done nutritional analysis and we have done shelf life studies. So that is their experience they have shared. If you have any questions, I can translate and ask them to answer. Ma'am, please ask them what are the challenges that they faced initially, whether the family was reluctant or was supportive, society was reluctant or was supportive. Sure. ಪುಷ್ಪ, ಶಶಿಕಲಾ, ನೀವು ಶುರು ಆಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಅಕ್ಕಂಬಕತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಯಾವ ತರ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಮಂಜುನಾಥ್, ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಊರದೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಪುಷ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಪ, ಸರಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವು ಮೇಡಮ್, ಮುಂಚೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಹಂಗಾಗಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. Okay. So Shashikala is saying that family did not really oppose, and she came here and she did this and they were happy to see her engaged. Whereas Pushpa was saying that generally the tendency is to go for a garment factory job there, and that was not a very good experience. And she found that the quality of life has improved for her when she joined the Sangha, the SSG group, and she started working for the Manini. So that is what she's saying. So Shashikala, Pushpa, namdu awareness alli nimdu family alla attend madidara? Nimdu ಯಜಮಾನರು ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಮೇಡಮ್. Yeah. So one thing that we did, and that's what I was asking them, whether their families attended the awareness. When Tide does the initial awareness, we invite the family also. Husband, sometimes the in-laws will also come. They will sit so that they also understand. They don't feel like that family member is doing something that they don't understand. So she's saying, Shashikala is saying the family attended. Pushpa, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ family attend ಮಾಡಿದ್ರಾ awareness program? So her family had also attended the program. Yeah. That is a nice practice, ma'am, that others can also take. That introducing the technology, its benefits and all to the family members as well, so that we do not have a reluctance at the community level. So I would sometimes I start giving a suggestion. Sometimes we've had suggestion from the father-in-law, mother-in-law saying that do this, do that, something like that. So it's interesting. Yeah. Basically, even if the women are not so much technically sound to get at the technology, even the family members can take up the technology. That is, there's no issue in them taking up the technology and having a business and all. So, ma'am, I would like to if we can have some information which focuses more on the role of the biomass dryer that we had used in technology. Obviously the process of manufacturing the biscuits and all, that was
that was a part of it. But biomass, if we can focus on how the biomass was a part of and how it benefited. Yeah, sure. So I'll give one small brief intro, then I will ask them to talk about it. So basically, in India, as you all will know, biomass continues to be a primary cooking fuel because of ease of access, and it is also available free of cost, and it deals very well with the cultural habits of people, especially for cooking. So Tide had taken the stand that we will definitely encourage people to move to clean cooking. But if they're still continuing to use biomass, then we'll provide solutions where the biomass can be used in a better way, in a more efficient way, and also with a less emission. So that is our philosophy whenever we design something. And in these places, our idea why we did biomass oven was that basically electricity is not reliable, and LPG is very expensive, and therefore we wanted to introduce biomass oven, and we are still working on a portable version that these women can take home, and they can make small batches of biscuits, because we are looking at not really big enterprises, but cottage small units, and within their area, if they're able to service, we don't want too many competing also. That village small settlement, if there is a bakery, the woman can supply to her, like that. So for that, we found out that the best option is biomass, because you don't will have not have a LPG there, will not have electricity. That is the reason for designing this biomass oven, and we developed the protocol and we gave it to them. To be honest, initially there was a reluctance. The women felt, in fact, Manjunath, our person, will tell you, Manjunath, namdu first trial alli yav tara avaru helidru, finish sari illa madam, adu LPG tara bandilla, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ ಮಂಜುನಾಥ್? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಯೋಮಾಸ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಸಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು 3 to 4 ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮು ಇನ್ನು ಬರ್ನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we had challenges, he's saying. We had to do trials because either it would be undercooked or it would be burnt. Because the same protocol that we were following in LPG or electricity could not be used here. So we had to change. Even though we had given the checklist out of habit, the women were following something that they were doing in the other ovens, and therefore first 3-4 batches there was a lot of wastage, and we had to keep on repeating. Then after 3-4 batches, after they looked at the product and they tasted, and we showed them the test report also, the acceptance came. So that is our experience. It was a very, I would say, initially after 1 or 2 trials, even we were a little disheartened, thinking why. But then we understood that there is a process to follow when we introduce a new technology, and we had to do it very slowly, and we had to listen to them. We could not tell them that nala use madi, because we had to hear their opinion also, and then slowly we did that, and that is how the whole thing started. So when we gave it for marketing also, once they tried to give somewhere saying the bare oven alli, we did it in different oven, I think psychologically they said it's not good. Then in another place we gave what we call as a blind sample, saying that just taste this, then the feedback came, no, it's the same. So we also went through a learning when we introduced this, and it took some time for the women. I'll ask this women also. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಪುಷ್ಪ, ಶಶಿಕಲಾ? ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ವಾ LPG ಇಂದ? ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? LPG ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಕರಿ ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಗ 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತವೆ ಮೇಡಮ್. Okay. She's saying in 25 minutes they are able to bake it. It took some time to get there, but they got the hang of it, and they feel now that the quality, finish, everything they can achieve. Pushpa, nimge ಏನು feedback ಇದೆಯಾ?
Okay. Yeah, tell me. Yeah, the next question would be like, as I can take the point from your information that you have deployed 2 to 3 at least biomass dryers in the community. So, like, is it the correct number that I'm saying, or like how many biomass No, dryers sorry, we have have been? not yet deployed. So, no, to just to tell you the facts, we have not deployed. The reason, the reason is that, like one of the women mentioned FSSAI certification. One of the things TIDE is very clear about is that food products, we check whether the place of production has the FSSAI certification. Only then we encourage them. So not everybody can afford to have an FSSAI. So our idea is that we have a slightly different model called hub and spoke model, where certain pre-processing happens at the home level. Then they can bring the ingredients here. The final product gets made here as per the hygiene standards set by the FSSAI, and the packaging and labeling can happen here. So this is what we are trying to do. Now we are working with almost 150 women entrepreneurs in the district. We are seeing that at least 10 to 15 of them are now applied for FSSAI for various other products like that ragi malt and for the ragi flour. So now with those people, we are experimenting with the bakery oven. We are giving them that bakery oven and asking them to produce these biscuits, mainly because of the FSSAI availability. Because we can't give it to everybody. It's a food product. You need the FSSAI. That is the only limiting thing. So the number has come from the number of women who are having the FSSAI. We have just started this, ma'am, the home-based thing. It is still in the trial stage. It is not really scaled up yet. Right now, the biscuit production is happening mainly in WTP. All the other ragi products, many other products, women are making in their homes also. So what I can learn from the thing is that you teach them what is the exact process of like filling them or making them to the giving them market. But it is like a level of opportunity that they'll be getting in meanwhile. Yes. Okay. Yeah. So you and are we just do a lot of creating soft testing. yeah creating sorry. A chain creating a chain in the meanwhile, so that they can get to learn that this is the what needs to be happened at their level as well. Absolutely. So I can ask them to talk about their understanding of the profits. Pushpa Shashikala, ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್. So can you talk about that little bit? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಂತ್ಲಿ 5% ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 24,000 ರಿಂದ 25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 14,000 ರಿಂದ 15,000 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. So she's saying that they're keeping track of the profits and the margins. And pre-COVID, they were able to sell up to 25,000 biscuits a month. And between the COVID period, it came down to about 15,000 or so. Again, it is starting right now. So we are also teaching them to do bookkeeping, to track the profit, to control the price of the raw material as well as the quality of the raw material. And we are also telling them like margins, rural, how much, urban, how much, how to take care of certain things like logistics and all of that. So this is a continuous training. One time it won't happen. We keep doing the refreshing training. So technical training is one. We have an enterprise training. So in that enterprise training, we talk about marketing, we talk about costing, we talk about other things like certification, packaging, labeling, filing, income tax. So Manini, we ask them to file the income tax. We help right now, but we tell them every year our accounts person goes and shows them the book and tells them that this is what you have got and this is what your tax is, and they have got a bank account also. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ನೇಟರಿ? ಪುಷ್ಪ ಶಶಿಕಲಾ, ಬಾಮಿನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಂದು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಶಶಿಕಲಾ. ಓಕೆ, ಶಶಿಕಲಾ ಇಸ್ ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿದಿರಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್. So she looks at the passbook and she is the signatory for the checkbook and all of that. Okay, ma'am. So like this is also a learning from your experience that
this financial education is also important in this, because ultimately they have to get to the market. They need to have an information of how the market works, how the finances work, how to like bookkeep the things, and like how to optimize the process for the more things. So thank you for we'll thank Pushpan, Shashikala, and everyone, Manjunath sir, for having this interactive session, and we'll join with you, ma'am, in the session 3 for as panelists. Should I ask them to stay back? Should I ask them to stay back? If they want to hear, you are they are very welcome. Otherwise, the session is also live, so they can hear their. Oh, sure. If they can give any other suggestions that they feel at the community level, community. Yeah. ಪುಷ್ಪ ಶಶಿಕಲಾ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆತರ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್? ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಕು. She is asking for marketing linkages. They are willing to supply, make more also. She is saying we want the marketing linkages. I think ಹೇಳಿ ಪುಷ್ಪ. ಬಯೋಮಾಸ್ ಬೇಕರಿ ಓವನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಗೆ 180 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದು 300 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಯೋ ತರ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ Okay. She is asking for a higher capacity oven also. Right now that batch is 180 biscuits. So she is saying that 300 biscuit is required. Okay, so that we can work on, I think. Yeah. ಬೇರೆ ಏನು ಇದೆಯಾ ಪುಷ್ಪ ಶಶಿಕಲಾ? No madam. Thank you. Thank you ಪುಷ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಶಿಕಲಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ನೀವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಅವರು ಮನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. Thank you so much from the people from the side Bangalore, and we have for the session 1 we are completed with all the 3 community groups. So for the session 2 I'll be inviting Dr. Niti Shirvastav from Vigyan Prasar to conduct the session on social change makers. And as we have learned from this session, that the community is absorbing the technology. That is the main aim that we have with this program. We tend to have a information from the community about the community, and the technology that they have got in the need in the technology in the community. So now I'll hand over the session to Dr. Mitchell. Thank you so much, Tosha. It's great to learn that how our community is empowering through science and technology interventions. Thank you, everyone, and congratulations to all the community groups who are doing a wonderful job there. Thank you. Now we are in the second session, which is a conclave of changemakers, and in this session, we would gather the feedback and experiences from the societal changemakers and the change leaders who have brought about the change in the society through science, technology, and innovation interventions. So welcome on board. Our first change maker is Mr. Avinash Podaleji from Rajasthan. Mr. Avinash ji is an alumni of Vigyan Ashram, Pabar, and currently working in social work and research center of Barefoot College, Delonia. Avinash ji is working on IoT-based solar charge controller for rural electric workshop, and which is popularly known as solar lantern. Avinash ji is the first change maker of our today's session, today's second session. Avinash ji, welcome on board. Sir, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, अपनी कम्युनिटी और अपने एरिया के बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स और समस्याएं हैं उस एरिया में. सर अविनाश जी. गुड आफ्टरनून ऑल. तो मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ से आया. तो आपने मेंशन किया कि विज्ञान आश्रम का मैं एल्यूमिनी हूँ. तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम कम्युनिटी से जुड़ा था, जहाँ पे कम्युनिटी के रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है. तो वहाँ से जब मैं कंप्लीट करने के बाद मैं बेरपुट कॉलेज के टीम से जुड़ा. वहाँ पे सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत बड़ा काम चलता है. वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन वर्कशॉप.
कि जिसमें क्या होता है कि हम संस्था के लोग सर्वे करते हैं ग्राउंड पे जाके, तो वहाँ पे नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस को ढूंढते हैं, घर ढूंढते हैं जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। तो वहाँ से एक छोटा सा ECG ग्रुप बनाते हैं। तो वहाँ से महिलाएं चूज करते हैं, महिलाओं को सिलेक्ट करते हैं कि जो थोड़ा सा अनपढ़ हो और सेमी इलिटरेट हो, इलिटरेट हो, कोई उसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो उन प्रोडक्ट्स को खुद से अपने गांव में जाके लगाए, उसको उनका देखभाल करे, उनको रिपेयर करे और उसके बेसिस के ऊपर वो थोड़ा सा पैसे अर्न कर दे। तो ऐसा ही सिस्टम है जो रूरल इलेक्ट्रिक वर्कशॉप की तरह हम उसको बोलते हैं। तो उसमें एक प्रोडक्ट यूज करते हैं जो क्या नाम है उसका, तो ये है IoT सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो इससे पहले मतलब 2-3 साल पहले हम क्या करते थे कि वो 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते थे वर्कशॉप के अंदर, जिसके अंदर जितने भी सारे टूल्स है, सोल्डरिंग आयरन है, फिर छोटा सा टीवी है, फैन है और कुछ लाइटिंग का इशू है। तो वो सारी चीजें रिपेयर करने के लिए जरूरी होता है लाइट का स्टार्टिंग में। तो जो जरूरी है, तो उसके लाइट देने के लिए एक प्रोडक्ट है REW चार्ज कंट्रोलर। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि अभी महिला मतलब कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है कि महिलाओं ने सिस्टम इंस्टॉल कर दिए। मतलब आप सोच लीजिए कि एक REW कंट्रोलर है, मतलब होम लाइटनिंग सिस्टम है, गांव में किसी के घर में लगा दिया। तो 6 महीना है, 7 महीना है, उस पीरियड के उनको जानकारी नहीं होता कि पैनल साफ करना होता है, बैटरी को कैसे मेंटेनेंस करना होता है। तो वो उसका जानकारी जैसे आपने हमारे फर्स्ट सेशन में सुना कि वो हर घर में जाके सोल्डरिंग का, रिपेयर का वर्क करते थे। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है, मतलब वहां पे जाना, फिर वहां से प्रोडक्ट को निकाल के फिर वर्कशॉप में लाना, फिर उसको रिपेयर करना, फिर वहां पे जाके करना। तो उसमें उनको बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन चीज रिपेयर का छोटा सा ही होता है, एक फ्यूज चला जाता है, कभी कभी रजिस्टर चला जाता है। तो ये थ्रू होल्स काम होता है, तो आसानी होता है प्रोडक्ट को रिपेयर करना। ये जैसे से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुआ है, तो कंपोनेंट छोटे-छोटे होते जा रहे हैं। जैसे रजिस्टर हो रहे हैं, तो आप उसको हाथ से सोल्डर नहीं कर सकते, अभी मशीन चाहिए होता है। तो मुझे करना पड़ता है कि प्रोडक्ट को में कि महिलाएं अपने ही गांव में उसको रिपेयर करें और वो आसानी से मिल जाए कंपोनेंट्स। यही मेन दिक्कत है सोलार के जितने भी सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स है अवेलेबल अभी, उसमें यही प्रॉब्लम आता है कि एक बार रिपेयर का इश्यू हमेशा आता है, क्योंकि वो आप वहाँ पे स्पेशल टूल से ही आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेन दिक्कत है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि आप महिलाओं को लेके आते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रीजन है व्हाई यू चूज ओनली women's of those community, why not the males, the other counterparts of that society? पहले क्या होता था कि हम स्टार्ट किए थे कि महिला और पुरुष दोनों को ट्रेनिंग देंगे। तो लेकिन क्या होता है कि पुरुष होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया, तो वो सोलर के बारे में सब कुछ सीख गए, लेकिन वो क्या होता है कि फिर अर्बन सिटी में चले जाते हैं उन चीजों को करने के लिए। तो फिर क्या हो जाता है कि गाँव वैसे ही वैसा ही रह जाता है। लेकिन महिलाएं जो होती हैं, तो हमने एज ग्रुप डिपेंड किया हुआ था कि हम 29 से ऊपर की महिलाओं को सिखाएंगे, तो वो गाँव में ही रह, तो गाँव में इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकती है। तो वो गैप नहीं रहेगा कि आपने कुछ सीख लिया और बाहर जाके हो गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन का ही होता है, मतलब इंस्टॉलेशन होने के बाद माइनर प्रॉब्लम है कि रिपेयर, 2 मिनट का 3 मिनट का रिपेयर वर्क है, लेकिन वो करने के लिए स्किल्स नहीं होता, मतलब दूसरे आना है, फिर वहाँ से ठीक करवा के लाना है। तो यही मेन मोटिव है
कि गाँव में से कोई है कि जो वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहेगा, वो तो छोड़ के नहीं जाएँगे गाँव को, तो गाँव का विकास ही उस तरीके से होना है। आप किसी को वो हमेशा चेंज होता रहेगा तो मुश्किल है। तो अविनाश जी, आपके इन प्रयासों से क्या गांव की महिलाओं का सशस्त्रीकरण हुआ है? आर दे एम्पावर्ड नाउ? इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली भी हो सकता है। तो डायरेक्टली ये है कि वो रिपेयर का कॉस्ट वो ले लेते हैं। मतलब अभी हमने जैतून बानो उनका नाम सुना होगा। तो अभी वो हमारे संस्था से 10 साल से जुड़े हुए हैं। तो वो अभी क्या करते हैं कि वो पुराने वाले जो सिस्टम्स करते हैं, तो वो उसमें से उनका थोड़ा-सा कॉस्ट उनको मिल जाता है रिपेयर करने का। तो और उनके पास मतलब काम है कि जो हमेशा पास खेती होती है, खेती-बाड़ी होती है, तो वो वैल्यू एडिशन ही है रिपेयर का वर्क। और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन ये है मेन मुद्दा हमारा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, लाइट आ गया वहाँ पे, तो वो दूसरे चीज़ों के ऊपर ध्यान देती है। कि जो ये अविनाश जी, इससे किसी तरीके का सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ जुड़ा हुआ है इसमें उनके लिए? या महिलाओं वो जो रिपेयर करती है प्रोडक्ट्स को, तो उनका वो रिपेयर कॉस्ट ले लेते हैं। वॉइस आ रही है अविनाश? आवाज आ रहा है? नहीं सर, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। कैन यू जस्ट रिपीट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि महिलाओं के इनकम में भी किसी तरीके का कुछ एडिशन हुआ है इसमें, उनको रोजगार प्राप्त हुआ हो इससे? या उनको रोजगार मिलता है, रिपेयर का कॉस्ट उनको मिलता है, और जो मेंटेन करते हैं सिस्टम्स को, तो उनको परसेंटेज है जो गांव वाले ये करते हैं, डिसाइड करते हैं। मतलब जब पहले जो एसएचजी ग्रुप बनता है, उस समय हम सारा प्रोसीजर लिखते हैं कि महिलाओं को कितना मानधन मिलेगा जो ये सारे सिस्टम को रिपेयर करे, मेंटेन रखें। ओके सर, धन्यवाद। तो सर, किस तरीके की आप ट्रेनिंग और अवेयरनेस वर्कशॉप्स और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स चलाते हैं महिलाओं को का स्किल डेवलपमेंट करने के लिए सर? क्योंकि आपने जैसे बताया कि मतलब उनका एजुकेटेड होना या लिटरेट होना जरूरी नहीं है, तो हर तरीके की महिलाएं आपके साथ में आती होंगी, तो किस तरीके की तैयारी, किस तरीके के वर्कशॉप्स आपको करना पड़ता है उनको सिखाने के लिए? और शिक्षा का होना या ना होना क्या कोई बाधा लाता है इस चीज में उनको ट्रेनिंग देने के लिए? मतलब आप सोचेंगे कि सोलर प्रोडक्ट को रिपेयर करना है और इंस्टॉल करना है, इसमें स्किल का मतलब एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। आप इलिटरेट होंगे तभी भी ये आप काम कर सकते हैं। मतलब आपको एक बार सिखा दिया तो आप ये कर सकते हो। लेकिन इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम चलता है कि जिसके अंदर हम उनको फाइनेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। मतलब फाइनेंशियल कैसे पैसे इकट्ठा करते हैं, क्या कर्ज कैसे लेना है, फिर उसको कैसे यूज करना है। तो ये फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी है, और इसमें हमें आईटी भी ट्रेनिंग देते हैं, मतलब जैसे कि मोबाइल को कैसे यूज करना है, आपकी ऐसे सारी चीजें हैं। तो ये एक ही नहीं है प्रोग्राम, ये सोलार ही नहीं है, इसके साथ थोड़े बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट्स है जो हम मॉड्यूल्स में उनको हम सिखाते हैं। बहुत ही अच्छा अविनाश जी, एक आप ऐसे वर्क को सामने लेकर आ रहे हैं, उनको सशक्त कर रहे हैं जिनके पास अभी तक मौके और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होते थे। सर, क्या एक घटना थी जिसने आपको इस तरीके के काम करने के लिए प्रेरणा दी कि आप कम्युनिटी के लिए कुछ करें? अविनाश जी, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी सर, आप अपनी प्रेरणा के बारे में बताएंगे, क्या प्रेरणा थी आपकी
जिसके तहत आपको लगा कि आपको कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए तो कुछ करना चाहिए? तो एक मोटिवेशन है कि जब मैं गाँव से हूँ, तो मुझे इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट्स को खोलना, रिपेयर करना ये बचपन से पसंद है। तो ये था कि एक इश्यू था कि हमारा में ही कि मेरे चाचा के घर में एक ये सोलर सिस्टम लगाया था छोटा-सा। तो उसको रिपेयर नहीं कर रहे थे, तो मैंने उसको खोला था, तो उसमें क्या था, एक कंपोनेंट था, कुछ तो एक ओपैम्प था, तो उसको उन्होंने स्क्रैच कर दिया था कि आप उसको देख के ठीक नहीं करोगे। तो वो कंपनी के पास ही जाना है और वो आप उसको रिपेयर कर सकें। तो मैंने उसके ऊपर स्टडी किया वगैरह ऐसे करके, तो मैं उसको बाईपास करके ऐसे ही वो चला दिया। तो उसके बाद मैं विज्ञान आश्रम से जुड़ा। वहाँ पे हमें एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब अभी आप किसी भी डिज़ाइन करते हो, तो उसके लिए ओपन सोर्स टूल्स हैं, जिसके अंदर आपको कॉस्ट कम होता है, मतलब फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आपका डिज़ाइन का कॉस्ट है वो कम आता है। तो ऐसी सारी चीज़ें मुझे एक साथ मिलता गया, तो यहाँ तक मैं आ गया। बहुत अच्छे सर। सर अब मुझे बताना, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ये क्या क्या लगता है कि ये जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी तरफ से जो हेल्प मिल रही है कम्युनिटी ग्रुप्स को, क्या इनफ है और इफेक्टिव मैनर से ये काम कर रही है? कहीं-कहीं पे हम सोच सकते हैं कि इफ़ेक्टिव तरीके से हो रहा है, कहीं-कहीं पे हमें काम करना है। जैसे कि अभी मैंने ये मेंशन किया कि ओपन सोर्स टूल्स है। तो अभी मेरा खुद का ही ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हमें सिखाते थे। मतलब इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनको सिखाना गलत है। लेकिन उसके अंदर हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है, जैसे काइटैड है, फिर वो फ्रीकैड है, जैसे सॉफ्टवेयर्स हमें कॉलेज में ही सिखा देंगे, मतलब उसको इंक्लूड कर देंगे, फ्री ओपन सोर्स है। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट है जो ग्रामीण इलाकों में है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा पहुँचेगा टेक्नोलॉजी। नहीं तो फिर वो उधर ही तक सीमित रह जाता है, कॉलेजेस तक। बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है सर, जैसे आपने बोला कि आप महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, उनको सशक्त कर रहे हैं, उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो महिलाओं को जब भी हम कभी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोशिश करते हैं, तो बहुत रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस रहता है कम्युनिटी का, सोसाइटी का। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको उस केस में फेस करना पड़ता है, जब आप कहते हैं आप उन लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं या उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको वहाँ पे मिलते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। कभी का मतलब अभी हम गाँव में महिलाओं को सिलेक्शन करते हैं, जिनको हम सोलर मामास बोलते हैं, जिनको हमें ट्रेनिंग देना होता है यहाँ आके तिलोनिया में। तो उनको सिलेक्शन प्रोसीजर में एसएचजी ग्रुप बनाते समय गाँव के पंचायत से एनओसी लेना होता है। फिर उन महिलाओं को सिखाना, मतलब डायरेक्ट उनको सोल्डरिंग आयरन हाथ में रखना भी वो गरम होता है। फिर ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बोलते हैं कि ये कंपोनेंट तो मेरे से समझ में नहीं आएगा, रजिस्टेंस है, कलर कोड्स है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, तो उनको मोटिवेट करना, तो उनके तरीके से समझाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये करते हैं कि हमारा प्रोग्राम में कि हम लोकल लोगों से ही उनको सिखाते हैं प्रोग्राम, मतलब रिपेयर कॉस्ट वगैरह, रिपेयर करना है किस तरीके से, कंपोनेंट को क्या बोलना है, लोकली में क्या बोलना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, टूल्स के बारे में बताना है, कैसे यूज़ करना है। तो ये लोकल लैंग्वेज में होता है, तो वो जल्दी आसानी होता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को सिखाना लोगों को। तो सर आपका कहना है कि यदि उनकी भाषा में हम उनकी चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, उनको बताने की कोशिश करें, तो उनका एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी और बढ़ जाता है, इसमें उनकी भागीदारी और बढ़ जाती है लोगों की।
ठीक है सर, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से आपको कोई सहायता मिलती है, जैसे लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे आपको कोई सहायता चाहिए हो, जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी लेनी है, लोगों को लाना है, उसमें आपको कोई सहायता लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है, और नहीं मिलती तो कैसे चैलेंजेस आते हैं उनकी तरफ से, कोई रोड ब्लॉक्स हैं उनकी तरफ से, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? कभी कभी प्रॉब्लम्स होता है, मतलब लोकल्स इशू होता है एडमिनिस्ट्रेशन, किसी किसी को कुछ आइडिया नहीं होता, कभी कभी लगता है कि हम उनको रॉब करना चाहते हैं वगैरह, ऐसी चीजें होती है। लेकिन वो सही होता है, एक बार आप उनके साथ बातचीत करोगे, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार उनसे बात करेंगे, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं वगैरह उनको समझा पाते हैं, तो वो आसानी रहता है। सर आपको क्या लगता है सर कि जो आप ये टेक्नोलॉजी लोगों तक ले जा रहे हैं, क्या ये सच में उनकी समस्याओं को सॉल्व करने में कुछ हेल्प कर पा रही है? उनकी जो इतनी दिनों से जो उनकी समस्याएं चली आ रही हैं, उनको सॉल्व करने में कहीं आपकी टेक्नोलॉजी कुछ हेल्प कर रही है? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सर? रोजगार दिया, उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया, उनकी मेंटालिटी को चेंज किया, उनको सशक्त किया, वहाँ की सोसाइटी को, जो अभी तक जहाँ तक लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते थे, उनके पास रीच नहीं था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किस तरह कैसे लगता है आपको कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने में हेल्प की है? हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभाता है इसमें, सशक्तिकरण और उन लोगों को आगे आने में, हमें क्या करना है, कहाँ तक आगे जाना है, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, हम उसी गांव में ही रह के सारी चीजें यूज कर सके हैं, उसका लाभ ले सके, ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करता है टेक्नोलॉजी। जैसा कि अविनाश जी आपने बताया था कि आप पुरुषों को ट्रेनिंग देने में ये है कि वो ट्रेनिंग पाने के बाद वो पलायन कर जाते हैं और शहरों में काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। तो इसके विषय में आप कुछ बताइए। अगर ये देखा जाए तो सही मायने में इस पूरे समाज का सशक्तिकरण तो नहीं हुआ, एक तरह से सिर्फ महिलाओं का ही हुआ। ये इनडायरेक्टली है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं उस तरफ से ये है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रायोरिटी लेते हैं तो महिलाओं के साथ जाना ये फायदेमंद है हमारे पर्सपेक्टिव से। और पुरुषों के पर्सपेक्टिव से देखें, मतलब हम पलायन का पर्सपेक्टिव देखें, लेकिन उनका भी ये हो रहा है कि उनको वो लग रहा है कि शहरों में जाके उनका फायदा है, तो अविनाश जी, अंत में आपका कोई सुझाव है, कोई सजेशन है जो आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए, जो अभी भी रुकावट है पूरी तरीके से, सारी जो भी आवश्यकता है, रिसोर्सेज है, अभी भी कम्युनिटी और सोसाइटी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो कुछ सुझाव है आपका सरकार के लिए, सरकार की नीतियों के लिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए? सरकार इसमें बहुत ज्यादा काम कर रही है, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर सोलर प्रोडक्ट्स, इसमें एमएनआरई बहुत बड़ा काम कर रही है। जो सोलर के जो प्रोडक्ट्स है उसका रिपेयर करने का जो वो ये रख रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो हम उसके लिए चाहते हैं, मतलब जो भी अभी प्रोडक्ट डेवलप आने हैं, कमर्शियल भी आने हैं, और जो भी प्रोडक्ट है उनका रिपेयर का फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। उसके साथ कि मतलब कितना वैट होना है, कितना पर वैट के पैसे इकट्ठा करवाने हैं, स्टैंडर्डाइजेशन जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाना है, तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ही अच्छा काम आप समाज के लिए कर रहे हैं, और हमारी आशा है कि आप आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे और हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी को सशक्त बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए।
अब हम अपने अगले ग्रुप के तरफ पढ़ते हैं। हमारे सेकंड चेंज मेकर हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, which is an autonomous institute under MOES, developed technology to convert saline water into the fresh water using technique called low temperature thermal desalination. So CN Shanjan ji is our second change maker of that group. Shanjan ji is a superintending engineer LPWD, who took the initiative to demonstrate the technology to the local people and help NIOT to customize the technology based on the requirements of the local people. So Shanjan ji is our second change maker of today's session. He is there, and along with him are certain other senior officials of this region also. So all of us, I request Shanjan ji sir to please introduce yourself and tell more about yourself and about Lakshadweep and the Karavati Island. What type of problems persist in this area? Yes, sir. I am Shahjahan. I am Shahjahan, Superintending Engineer, Lakshadweep PWD. The technology is indigenous technology. There is no customization is required in this regard. So this is the production of the fresh water. It is the technology using the. It is ideal for Lakshadweep. According to geographical condition, the deep water, it is getting the cold water from the 350 meter depth. It is near to very Lakshadweep Island. It get such a deep water, cold water is very easily. So we can produce the water from the sea water. The brain comes in RO plant. Normally it is using RO plant technology. The brain is very hard water. About 40% of the water becoming the potable water. So brain comes more concentrated. It will be affecting adversely in the environment situation around the sea water. So this technology, the brain, it is very less near to same fresh water, same sea water level. That is 1% is converted to potable water. So it is only 2-3 motors are available. No mechanical part is available in the desalination plant. That is the main benefit of this technology. शांजन जी, पहले मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि कैसे वहां पे क्या वाटर की समस्या थी। सिंस लक्षद्वीप आइलैंड है, वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की पहले क्या समस्या थी? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द लोकल पीपल टुवर्ड्स द ड्रिंकिंग वाटर और द फ्रेश वाटर रिसोर्सेस? This is only groundwater is available. It is on to 1.5 meter depth. It is only the rainwater stored during the rainy season. It is a thin layer of the rainwater. It will be used as a drinking water. If it is more pumped in the certain area, the potable water is also not available. It is brackish water. Is the hard water is only available. So previously the local people go to some other location where the potable water, that also little bit hard water, more than potable limit. The hardness is more than potable limit. Going for this with cans and picking the water from various location wherever the potable water is available in Kavarati. So now we once in 3 days we are distributing this water to pipeline, so the people collect the water for the drinking and then cooking purpose. So it is very convenient to the people. It is almost to within 100 meter away from their household to get the this potable water. Sir, we would like to know that this potable water that you are talking about is made from the desalination plant, but the desalination plant derives its water from the underground or from the sea? It is deep water. It is fresh. These are two type of water we are taking for making this potable water. The surface water is a 8-degree temperature surface water, and deep water about 350 meter deep. We will take the cold water. That is for condensation purpose. The one flash chamber, we will reduce the pressure to 30 millibar, so that the
28-degree temperature, this water will be evaporate. 1% of this warm water that is taken from the surface, it will evaporate in this 30 millibar pressure vacuum chamber. It will be condensed. The cold water will be circulated through the copper tubes in a condensation chamber. This evaporation, this evaporated water will be touched into the cold copper tubes. It will be condensed. That will be collected as a fresh water. ओके सर, ये पूछना है कि जो रॉ वाटर आप लेते हैं वो सी से लेते हैं कि वो एक्विफर से लेते हैं? Yes, जो अंडरग्राउंड? Both the water taking from the sea only. One is surface water, that is 28-degree temperature. One is from the 350-meter depth. That is a cold water. It is used for condensation of this evaporated water. Okay. No, sir, we would like to know now that whether you people approach to NIOT or NIOT came to you that we have this technology with us, how this whole process goes. 2004, NIOT themselves came with this technology. There's a pilot project. It was very successful. Then we have taken another two in Kavaratti project. First project, they themselves installed this project. The two, Agatti and Nikoi, we extended the project with our administration cost. The first project was done by the NIOT only. They own their cost. Okay, so will you help? Have you helped in dissemination of this technology to the community people? Like it was said that you help in customization of this technology based on the requirement of the local people. So what type of how you made this communication happen? Like have you conducted any type of training, awareness workshop for the community people so that they come to know about this technology? The technology, it is a one plan. There is no need to work out by the public. There is no customization is required in this. These are indigenous technology developed by for the this plant only. There is no customization required. Okay, sir. So once this technology is there, when you convert the seawater into the potable water or the drinking water, have you how you communicated to the local people that this water is available, you can use it? You whether you have to teach them, you have to make them aware. How this procedure is going on? Well, have you conducted some awareness workshop, some skill development workshop? Not skill development. There is no skill development workshop is required for this, but how you take this to the people, sir? Madam, this water is a precious thing. So the fresh water is getting means everybody is come very without any communication. They are very well accepted. This is in Lakshadweep. It is called as a NIOT water. In all the Lakshadweep, it is called as a NIOT water. This is a very famous. They are well accepted this. So enough amount of that water is generated there so that the community can use it for their daily purpose for each and every household requirement. Enough production of the water is there. Now we have getting 9 liter per capita day in Kavaratti, 13 liter per capita day in Miniko and Agatti almost. So it is only cooking and drinking purposes now it is served. Now 1 lakh liter per day we are producing. Almost 6 lakhs is required for entire purpose per day. So it is be single plant. It can be produce more water. It can be 3 lakhs or 4 lakh. It will be technology should be developed so that it can be one plant. Now other island 1.5 lakh liter per day. It is going to install in another 6 islands. Now it is installing 1.5 lakh liter per capita per day. So it should be it can be developed so that 3 lakhs or 4 lakh it can be technology can be improved so that we will get the more water to supply to the community. Sir, we would like to know कि this endeavor of yours must be helping in saving the underground water or must be helping in keeping the water level maintained in the aquifers. Is it so? Yes. We were in critical in the Agatti. The water level was very critical according to groundwater research. So now it is become in the safer side. In the last 2 years, it is came into the safer side.
using of this water, pumping is reduced in the groundwater. Okay. Now also it is critical. Population is higher in being a capital. Floating population is more in the Kavaratti Island. Here also in now Watak on other one more plant is coming, expected soon. Work. So if it's coming more, it will also come in the safer zone in the groundwater. So basically, these desalination plants are helping the maintaining the aquifers. Yes. Sir, how was the acceptance of the society for using this water? Is there any type of resistance initially when this water is introduced? No. There is no resistance. Even if 1 or 2 days if the plant is out of order, anything, community will come to help our need, and they will come to help anything for our requirement. Any manpower help also they are coming. Voluntarily they coming to make the plant good. We are getting all the support from the community. Okay, sir. So what about the maintenance issue, maintenance of the plant you have plant? Because have you teach or train the local people to maintain the plant, or is it you people only do the job? No, local people can't do this maintenance, since the pipeline, one is the issue is the one pipeline is going from the sump to the deep water, about 600 away from our seashore. So whenever the Oki or a cyclonic waves comes, some damages happening due to tear and wear of the pipe. So make holes, and like that recently also we happened. So it will rectified within 25 days. We are able to rectify our people, and with the help of NIOT. If the severe condition happens only, that is all. Only 2-3 motors are available. Remaining, it is no issue with there is much mechanical part available in this plant. So, sir, is at any of the stages there involvement of the from the side of community, or the whole process is taken care by the local administration? So taking care by the administration only. The community help their labor manpower helping for the pipeline doing, also help with our manpower. Community. Like, sir, so putting this plant in their area will help in them in generating the livelihood resources also for the local people there. Yes. These are potable water is the essential. Water is the main of the day-to-day life. This is helping the community. Sir, what do you think that giving the water for the schools and Anganwadis, all we are giving the sufficient water storage to this potable water to schools. So mainly the fecal contamination is the mostly available in groundwater in the located. So groundwater is very low. So we will potable water is the main potable water is the desalination plant. In health and sanitation of the area also, that since this fresh water is available there in much amount. So what do you think that whether this technology is able to address the community issue and problem, or some other, still there is some standardization is required? Yes. This technology is the most useful technology. It will definitely help the community water supply. And sir, this water is reaching households through pipelines, or? Yes. Only we now able to use the street taps only. We cannot give the only 1 lakh liter per day it is producing. We are not in a position to give the household connections. Okay. So the connections are public connections, not private. Street tap only. Street taps. Okay. Street tap. Okay, sir. Any suggestions from your side that it still need to be from the government initiative, which need to be taken to address the issue more appropriately? Yes. Already we submitted the proposal to the ministry to give the more plants, more having the capacity, more capacity.
can be produced, give the household connection also. Sir, being the water, which is the basic necessity of our daily life, this is the wonderful project complete and the technology provided by NIOT, and I hope this technology is able to serve the local people there. Thank you, Shanjanji, and your team who are doing the wonderful work there. Thank you for being there with us and sharing your story with us. Thank you so much, Shanjanji. Now moving ahead with the third story, Thank you. Thank you. which is from Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh, there is a great demand of drying technology to preserve fruits, vegetables, meat, spices, etc. But thus, the Arunachal Pradesh State Rural Livelihood Mission, with the support from Clean Network, established a biomass fire dryer in Roing. Mr. Dangdap Taing and Mr. Pertin from Roing played a key role in the dissemination of this technology to the people of that region. Welcome on board, sir. Mr. Taing, sir, and Mr. Pertin, are you there? Yes, we are here. Actually, Dangdap Taing is Srimati, and also my non-person is Srimati. Yeah. Sorry, sir, I'm not able to hear. Will you please repeat, sir? Sorry. Yeah. So good afternoon. Good afternoon, everyone. So am I audible right now? Yes, sir. You are audible now, sir. Yeah. So thank you for giving this opportunity. So I am William Lahari, Block Mission Manager. Welcome, Larry, sir. Yeah, thank you. So here we are three of us. We are 80 members. So this was initiated by Clean Energy Access Network for this biomass dryer. So it is very much required in this region. Of course, what happens is like there is a huge production of agri and horti, but then due to lack of market linkage, they are not able to get price means like the price margin they are not able to get adequately. So right now this biomass dryer it is helping them to preserve some of the produce. So I would like them to explain their experience and their the way they are approaching towards this biomass dryer. Sure, ma'am. Please, I request ma'am to please introduce yourself. Tell about yourself. What are you doing? Tell about your region. What problem is there? What is the what is the story of your area, ma'am? Please. Madam, they will be speaking in Hindi. जी मैडम प्लीज हिंदी में बोल सकते हैं आप अपने बारे में बताइए मैम अपने एरिया के बारे में बताइए अरुणाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर स्टेट है सर किस तरीके की समस्याएं उस प्रदेश में थी मैम हाँ, आपके एरिया में यस मैम प्लीज मेरा नाम ओईमांग पर्सन है श्रीमती हम लोग का यहाँ में प्रोडक्शन ज्यादा होता है लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाता है तो मार्केटिंग हम लोग को एक्चुअल रेट नहीं मिलता है यहाँ में तो इसका कारण से हम लोग मतलब बायोमास ड्रायर में प्रिजर्व करके रख सकता है बहुत समय तक इसलिए हम लोग मार्केटिंग में ये करते हैं मार्केटिंग करता है प्रिजर्व करके तो मार्केटिंग लिंकेज भी नहीं है यहाँ में तो थोड़ा सा एरिया है और हम लोग बस्ती में हैं तो मैम इससे पहले जब आपके पास ये ड्रायर अवेलेबल नहीं था इससे पहले तो आप लोग कैसे अपनी खेती करते थे अपने क्रॉप्स की मार्केटिंग कैसे करते थे हम लोग तो ये हम घर में आग जलाता है वहां में प्रोडक्ट को रखते हैं हाँ तो हम लोग मार्केटिंग के लिए वहां का मतलब नहीं मैम कोई ट्रेडिशनल मेथड पहले जैसे आप यूज करते थे ड्राई करने के लिए या अपनी उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वहां के प्रोडक्ट्स की
पहले कौन सी तकनीक आप यूज करते थे मैम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने क्रॉप्स को सेव करने के लिए, उनको उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए? हम लोग आग में सुखाते हैं। जी, तो आग में अच्छा। सुखाने के लिए तो हम लोग मतलब ह्यूज अमाउंट को एक बार में नहीं सुखा पाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सुखाते हैं अपना खाने के लिए, घर यूज के लिए। अच्छा। और अदरवाइज उससे तो ज्यादा होने से हम लोग मिडिल में अदर स्टेट का हमें व्यापारी लोग आता है, वो लोग ले जाता है। तो मैम ये जो क्लीन नेटवर्क की आपको जो ये बायोमास फायर ड्रायर मिला है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप अपनी क्रॉप्स को ड्राई कर सकते हैं। जी मैम, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप, हाँ, कि आपको क्यों लगा कि आपको ड्रायर की जरूरत है, ताकि पुरानी जो आप लोग ट्रेडिशनल तरीके से पहले जो तकनीक यूज करते थे और अभी ये बायोमास फायर ड्रायर को यूज करके अपनी क्रॉप्स को ड्राई करते हैं, उसमें कैसे इजाफा हुआ आपकी क्रॉप्स को बढ़ाने के, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? हम लोग पहले आग में जलाता था, तो आग में सुखाता था तो उसका रंग भी मतलब काला काला हो जाता था। तो अभी हम लोग बायोमास ड्रायर में ह्यूज अमाउंट में सुखाता है, लेकिन उसका कलर भी मतलब जैसा था वैसे ही रहता है। तो हम लोग एक ही बार में अगर मतलब वो धूप देने से हम लोग बाहर में नहीं सुखा सकता है। बायोमास होने के बाद हम लोग बारिश में धूप में हम लोग मतलब समय नहीं लेके सुखा देता है। मैम वो फिर टाइम सेविंग भी है आपके लिए और आपके प्रोडक्ट को भी अच्छा बना के रख देता है, उसकी शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज। तो मैम कौन कौन सी क्रॉप्स और कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप इसके थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं मैम? हम लोग जिंजर और पाइनएप्पल, उसके बाद हम लोग का चिल्ली, फिश, मीट और वो स्पाइसेस मसाला पत्ता हम लोग अपना लोकल, तो वो सब कुछ सिखाता है। और बैम्बू सूट। तो मैम आप अपने साथ में आपके आसपास की महिलाओं को भी शिक्षित कर रहे हैं, कितनी महिलाएं या कितने लोग आपके साथ इस काम में जुड़े हुए हैं? हम लोग का यहाँ में 6 तो हेलो जी मैम जी, हम लोग का एक प्रोजेक्ट है, इसमें टोटल 8 एसएसजी होता है। एक एसएसजी में मिनिमम 8 मेंबर्स होता है। तो अराउंड 80 वुमेन लोग हैं, तो हम लोग सब मिलकर करते हैं। तो मैम पहले उन लोगों के लिए कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, उनको किस तरीके से सिखाते हैं आप लोग? यहाँ पे आके फिजिकली बुला के उनकी वर्कशॉप वगैरह कराते हैं कि उनके पास जाके या ऑनलाइन मोड से, किस तरीके से उन लोगों को सिखाते हैं? वहाँ से ट्रेनर लोग आया था, तो ड्राइंग में आके हम लोग को सिखाया है, कैसे सिखाना है। सिखाने के बाद में उसको हम लोग कैसे मार्केटिंग में ले जाके पैकेज करना है, वो सब सिखा के गया है। तो एक ट्रेनर था गोस्वामी, वही हम लोग को सिखाया है कैसे सिखाना है। तो मैम यहाँ पे आके उन्होंने फिजिकली लोगों को खुद से सिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी कैसे यूज करनी है, कैसे ड्रायर को यूज करना है? समझा नहीं? रिपीट कीजिए मैडम, रिपीट कीजिए। मैम सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फिर क्लीन नेटवर्क और टाइड के थ्रू लोग आए थे आपके पास में, जिन्होंने आपको शिक्षित किया, आपको इस तकनीक को कैसे यूज करना है उसको, उसके बारे में शिक्षित किया, उसको सिखाया? कैसे की कुछ वर्कशॉप्स वगैरह ऑर्गेनाइज की गई थी, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स? हाँ, वो वहां से आया था एक आदमी ट्रेनर, तो हम लोग को पूरा सब मेंबर्स को हम लोग बुलाया था, तो सबका सामने वो करके दिखाया इसको कैसे सिखाना है, पाइनएप्पल को किस चीज से काट के सिखाना है, चिल्ली को कैसे सिखाना है, बीज को वो भी छोटा छोटा पीस लंबा करके मट्टी में कैसे आदमी को एडिट करेगा, वो चीज पीसेस करने का तरीका वो सब सिखाया है। तो एक तरह से आके मैम अपनी सोसाइटी में लोगों को और लोगों को शिक्षित आप लोग कैसे करते हैं उन्हीं वर्कशॉप्स के थ्रू?
जो जैसे अपने आगे साथी महिलाओं को आपको सिखाने के लिए इस तरीके की वर्कशॉप आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको सिखाते हैं और लोगों को कैसे जोड़ते हैं अपने साथ में? मेडल में यहाँ तो हम लोग का जिस तैयारी है, हम लोग रेडी करके एक दो बार ही बनाया है, और अभी ऊपर से हम लोग का प्रोडक्ट को कितना दिन तक हम लोग रख सकता है, वो चीज को हम लोग ईटानगर भेजा है, अभी तक आया नहीं है। वहाँ से हम लोग जैसे कि मीट को सुखा के कितना दिन तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वो चीज भी हम लोग अच्छे से जानना है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से जब रिजल्ट आएंगे तो हम लोग बस्ती के सब जितना भी महिलाएं हैं उन लोग को भी हम लोग सिखाएंगे कि हम लोग कच्चा माल को नहीं बेचते, ऐसा सुखा के भी हम लोग पैसा मिल सकता है, वो चीज हम लोग सिखाने वाला है। लेकिन फिलहाल तो हम लोग का लॉकडाउन कोविड क्या से ग्रुपिंग में भी काम करने के लिए मना किया है ना, तो ऐसे ही चल रहा है। मैम किस तरीके की कोई मार्केटिंग एजुकेशन वगैरह भी दी जाती है क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करना है, उसके लिए आपको कोई एजुकेशन दी जाती है? मार्केटिंग वगैरह के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक कैसे पहुंचाना है? मैंने एक्चुअली वो चीज हम लोग किया नहीं है, ये एसएमएल की तरफ से हम लोग को कैसे करना है वो भी ट्रेनिंग देगा बोल रहा है, और मार्केटिंग का भी हम लोग ऐसा किया नहीं है अभी तक, लेकिन शायद बहुत जल्द करने वाला है। हम लोग अपना बस्ती में ही बेच रहे हैं घर में। सप्लाई करें अपने ड्राइड प्रोडक्ट्स को, से कोई ऑर्डर्स मिले हैं मैम अभी की अभी आप लोग से प्रोडक्शन ही? हाँ मिलता है, जो अच्छा लगता है लोकली सुखा के जिसको खाने मन होता है। आजकल तो पता नहीं बहुत बीमारी होता है, रेड भी नहीं खा सकता है, वो नहीं खा सकता है, तो सुखा के दीजिए, आप लोग का कलर भी अच्छा है, अच्छा से सुखा भी है, तो ऐसा जितना भी ऑर्डर आता है वो हम लोग बना के देता है। और बस्ती में एक छोटा सा मार्केट है रास्ता का सामने में, हम लोग उसमें प्लास्टिक की थोड़ा पैकिंग करके बेचता है। मैम अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि जब भी ड्रायर का कंस्ट्रक्शन हुआ था ऑपरेशन और ट्रेनिंग के समय में किस तरीके का इसका एक्सपीरियंस रहा? ये तो हम लोग का एक्सपीरियंस तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये 4 लोग पहले बोला था एक बायोमास ड्रायर आया है, कोई ग्रुप इंटरेस्ट है क्या, तो हम लोगों ने कहा हाँ हम लोग इंटरेस्ट है वो चीज में। तो उस समय में वहां से आदमी नहीं आ सका था, लॉकडाउन हो गया था लास्ट ईयर, फिर भी हम लोग ऑनलाइन कैसे बनाना है वो एक उन लोग का ही आदमी हम लोग को दिखाया था कैसे कैसे बनाना है, तो ऑनलाइन ही हम लोग वो मशीन में घर को बनाना शुरू किया। फिर वहां से आदमी आया, वो भी डिलीवर के पास गया, ऐसा कर करके हम लोग कैसे बनाया। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया था, मेरे को नहीं लगा पाया, फिर बाद में वहां से एक आदमी आया तो वहां से आके हम लोगों ने दिखा दिया। उसका बाद फिर एक ट्रेनर आया, हम लोग कैसे कैसा करके बनाना है, कैसा पीसेस रखना है तो अच्छा से सूखेगा, अच्छा लगेगा कलर, वो चीज को सिखाया हम लोग को। फिर हम लोग उसको एक बार खुद से भी ट्राई किया तो जलने भी दिया, पूरा खराब हो गया था वो सामान, फिर हम लोग फिर ट्राई किया, तो अभी हम लोग 2-3 बार 4 करके अभी तो एकदम एक्सपर्ट हो गया हम लोग को ना। कोई कोई मछली को एकदम बहुत अच्छा से इस कलर बहुत अच्छा है बोलता है हम लोग का मीट को देख के भी। बहुत बढ़िया। अगर ऐसा होगा तो हम लोग यही से खरीदेगा, पहले जैसा हम लोग घर में जलाया था उन्हें सुखाया था उनको जला जला जैसे काला काला हो जाता है ना, तो अभी का ऐसा नहीं है, हम लोग तो सोच रहे और अच्छा मार्केटिंग कर पाएगा। तो मैम इसके जरिए जैसे आप लोगों को एक सोर्स ऑफ इनकम भी मिला वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के लोगों को, तो कैसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जीवन के स्तर में किस तरीके से बढ़ावा हुआ है इस टेक्नोलॉजी को अपने जीवन अपने लाइफ में यूज करने के बाद मैम? अभी तो फिलहाल वो चीज ये बिजनेस करके हम लोग
मिला है ऐसा तो बोलने का भी समय भी नहीं हुआ है, थोड़ा कम समय ही हुआ है हम लोग इसको स्टार्ट किया वाला। तो फिर भी आशा करती हूँ आगे चल के कमाई होगा शायद, क्योंकि हम लोग का यहाँ में तो ज्यादातर चीनी ये सब सड़कें गर्म सीजन में तो बहुत ही खराब हो जाता है, हम लोग फेंक भी देता है, लेकिन बायोमास ड्रायर आने का बाद में हम लोग को कर सकता है कि अभी इसको हम लोग बारिश हो या जैसे भी मौसम हो हम लोग आग जला के उसको सुखा के रख सकते हैं, तो बाद में तो उसका I think, ma'am, this technology is providing you a stagnant source of income to the society and the community living there. तो मैम सिर्फ वेजिटेशन को ही ड्राई कर रहे हैं आप, कि इसके अलावा मीट और फिशेस वगैरह को भी ड्राई करते हैं, या आने वाले समय में आप लोग का ऐसा कुछ वो है कि हम आने वाले समय में इन सबको भी मीट फिशेस और नॉन वेज फूड आइटम्स को भी प्रिजर्व करेंगे ड्राई करके? जी मैम। जी सर, तो हम लोग जो चीज हम ड्राई कर सकेगा उसको हम लोग करेंगे और कर भी रहा है, लेकिन अभी अमाउंट में कर रहा है, क्योंकि नहीं है ना कि मीट को सुखा के वो कितना दिन रख सकता है, हम लोग को इसके लिए अभी मालूम नहीं है, इसलिए अभी जैसे कि 1 मंथ हम लोग पैकिंग करके रख सकते हैं, 1 मंथ अगर हम सही कर सकते हैं वो अगर मालूम हो जाएगा तो हम लोग ज्यादा भी बना के 1 मंथ का अंदर इसको सेल करना चाहिए, आने लायक भी अगर हम लोग जान जाएगा तो उसका हम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उसको मालूम नहीं होने का वजह से हम लोग अभी तक आज बनाएगा आज सुखाएगा तो शाम तक या कल तक सेल करेगा। I think, ma'am, many things has to be done in the future, but the future is looking bright from this side. So, ma'am, any आप लोग का अभी कोई suggestion है हम लोगों के लिए या गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कोई मेजर रोड ब्लॉक है, जो चैलेंजेस हैं अभी जिनको रेक्टिफाई करना बाकी है, मैम? कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन है आपका आपकी तरफ से? हम लोग को मार्केटिंग और फाइनेंशियल ऐसे को आगे बढ़ेगा। Ma'am, your voice is breaking a lot. मैम एक बार फिर से बोलेंगे? जी, हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये है कि हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट और मार्केटिंग लिंकेज बना देने से हम लोग और भी आगे बढ़ेगा, महिला यही हम लोग का गवर्नमेंट से अपील है। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैम, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आप कर रहे हैं। आई थिंक ऐसे और ग्रुप्स हैं जो आगे आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। मैम और एक चीज जानना चाहती हूँ कि जैसे तकनीक को इस एक तकनीक को अपने सोसाइटी तक, अपने फेलो अपने साथी महिलाओं के साथ लेके गए, तो किसी तरीके का उनको कोई हिचक नहीं, हमें ये ऑक्यूपेशन नहीं लेना है, हमें ये काम नहीं करना है, हम जो अपना पुराने तरीके से करते आ रहे थे वही काम करेंगे, ऐसी कोई हिचक, कोई रेजिस्टेंस था आपकी साथी महिलाओं की तरफ से? आपको कोई स्ट्रगल करना पड़ा होगा? मारेगा एक दूसरे का दुख सुख शेयर करता है, फिर दूसरा दिन में अगला पार्टी आएगा ऐसा कर करके, तो सब महिला इसी को पसंद करता है। मैम आपको क्या लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आप कम्युनिटी को हेल्प किया है कि नहीं, किस तरीके से हेल्प कर पा रही है और कहाँ की कमी रही है? सर मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कम्युनिटी में अपलिफ्टमेंट हो पा रहा है कि नहीं, या अभी भी कहीं कुछ कमी है, किस तरीके के और प्रयास करने की जरूरत है?
ये जो टेक्नोलॉजी है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ सहायता दे रही है कि और कुछ प्रयास करने की जरूरत है? हाँ मैडम, अभी तक तो ठीक ही देख रहा है बायोमास ड्रायर था, तो अभी हम लोग कर करके इसको ये अच्छा नहीं है बोले तो बहुत बात का बात है। अभी तक तो कोई हम लोग अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे आशा है कि आगे भी आप लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और ये टेक्नोलॉजी विल हेल्प द लोकल पीपल देयर टू अपलिफ्ट देयर लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Larry sir for supporting us and be there during the program. Now we are moving toward for our third session, which is the panel discussion. And I invite my colleague, Mr. Abhinav Singh, to conduct the third session. Over to you, Thank you, Mr. Nidhi ma'am. Thank you, Nidhi ma'am. First of all, I would like to thank all the societal change makers and the community members who shared their valuable experience with us and told us how the STI intervention has changed their lives. Now we are entering into the session 3, which is a roundtable discussion, wherein the experts will mull on the key points from the community feedback and change maker sessions so as to strengthen and nurture the grassroots innovations. In this session, we would derive the learning outcomes, valuable feedbacks, and help devise a roadmap for strengthening the STI at the grassroots level. Further, our experts will help us identify the existing loopholes and make efforts to plug the same, identify bottlenecks, and address these. We believe these learning outcomes and feedbacks would go miles in strengthening and nurturing the STI ecosystem. हमारे साथ आज होना था पद्मश्री श्री अली मानिकफन जी को, जो is not here due to some 11th hour engagement. So I would like to tell some key points about his extraordinary or outstanding work that he has done. He is a grassroots innovator and a retired official from the Central Marine Fisheries Research Institute. Not to mention, he is a Padma Shri, and it was awarded to him in last year in 2021. Be it the field of marine biology, marine research, geography, astronomy, social science, traditional shipbuilding, education, fisheries, automobile, agriculture, and horticulture. He has ventured into every of these fields and has done a remarkable work. I would like to tell that for his 15-acre land in Velayur in Tamil Nadu, he produces his own electricity from a windmill, which is designed for himself. He has even a refrigerator at home, indigenously built refrigerator at home, which was made by him. In 1981, Manikfan even built an ancient Arab ship using traditional methods. So such is his work. It's remarkable. But present among us are other extraordinary experts and scientists. I would welcome Dr. Swati Bhugle, Dr. Jashwant Dadi, Organizing Secretary from Barefoot College. I would like to tell about Ms. Swati Bhugle. She has been associated with several organizations in the area of clean energy. Her area of work is largely in design and dissemination of thermal energy interventions for domestic and rural informal industry applications. Welcome, ma'am. I would also welcome Dr. SVS Fani Kumar, scientist of National Institute of Ocean Technology, Chennai. Dr. S. Sumanthi, who was with us in the first session, I think. She is from Tide Bengaluru. Kamlesh Bisji from the Barefoot College, and Sanjit Bunkar Roy. He has to be present, but he is not here. Sanjit Bunkar Roy, in place of Sanjit Bunkar Roy ji, Jaswant Dadi ji is there. So I would like to start with the Swati ma'am. Ma'am. Yeah. Hi. Yeah, can you hear me? Hi. Can you hear me? Yeah, ma'am, you are audible. Please tell us, ma'am, how these local level interventions help change the lives of the community members, and what are the existing bottlenecks that we need to address, and how these bottlenecks can be addressed. Yeah. Another application is using your camera. It says because I'm partly in that other meeting too. But is it okay if it's without the camera? Yeah, ma'am, it's okay if you can tell us. Yeah. Okay. I'll just yeah.
Yeah, ma'am. I was asking how these interventions have helped change the life of the community members, and what are the existing bottlenecks that we need to address. So I was just thinking that, I mean, first of all, let me just say I'm extremely sorry that I could not join the entire session because I was, partly in that Atal Innovation Mission meeting, and I've just taken about 10 minutes off to come and speak here. That was so kind of you, ma'am. We are really thankful that you have taken some of your precious time. Extremely grateful to DST for all that it has done for Tide for so many years. So I will do that in any case. Thank you. Okay. I am aware that today Barefoot College was presenting, Tide was presenting, and there was another organization that was presenting. While although I have not been able to listen in to the sessions, I'm aware of the work of Barefoot College, and I am in touch with the Bunker as often. They are also members of our Clean Energy Access Network, of which I am the president. Apologies to the other organization which I missed out talking about. Which was that organization which I missed out? From IIT Kanpur or somebody like that? It's NIOT. NIOT from Lakshadweep. Oh, okay, Lakshadweep. Okay. So one thing what I would like to say is that it's very good that DST is talking to community people in the community and asking them to think through about what is innovation, what is technology, what is science. These people don't really look at it like that. They just look at it more as what's there in it for me. I want to do something new and different because for different reasons, perhaps. But talking to these community members, is very, very important. And I have not seen anybody talking to community members with the kind of seriousness that I'm seeing, in this. I also briefly went through an earlier recording, about that. So some things, I'm just seeing that. If you look at generally the innovation scene, in the area of energy access or renewable energy, this kind of energy access for meeting people's basic needs for livelihoods in regions where grid is weak and unreliable, it's not the flavor of the month. When you talk of energy access, people tend to talk grid, megawatt solar, grid connected solar, but nobody really is really innovating for these people. And I would like to. I'm quite happy about the way people have communities have accepted some of the innovations that we have brought their way. But I think this is just a small step. We are at the first stage of product innovations. Where we take a product which we think communities need, and we help them, to get familiar with the products, etc. But that's just a small step. Later on, the next step would be the process innovations, which are not as common as the product innovations. These are innovations around training. These are ways of talking to community. These are ways of asking them what they need and customizing them. So the whole process innovation is a little bit slow compared to product innovations. The next step, if you are looking at it from the point of view of replication, scaling, which is what organizations like SRLM, etc., are looking for, are innovations in financial products and innovations in business models. We are not there as yet. Whoever it is, we can do a good job of product development with support of DST, etc. We can do a fairly good job of process innovations, but when it comes to financial products designing, interaction with banks, business models, there I find that we are not as much up to the mark. We've done most of the hard work, but फिर भी ना थोड़ा बहुत रह ही जाता है if we don't have that competency in financial planning, financial products.
अगर एक बैंक, if you try to go as a scientist, बैंक मैनेजर से मिलने जाओगे आप, तो बैंक मैनेजर आपसे बात नहीं करेंगे ठीक. They only want to talk to another person who talks the jargon and talks the language of finance. वहाँ पे थोड़ा बहुत I think that there is a need for somebody to to bridge this gap, because after having done after science, technology, innovation does all the work, if business and finance is not there to support, वहाँ पे then the real true potential of the innovations that we have worked on, it is बहुत दिक्कत होती है, and you get a lot of disappointment also. I've struggled so much. I've given a good product, people wanting it. If today one person you give a demo unit, फिर 10 लोगों को दो, then there will be 100 people saying हमको भी चाहिए. फिर हम लोग बोलते हैं खरीद लो. जब खरीद लो बोलते हैं, then again we've not prepared people for scaling, and neither are we ourselves conditioned or trained to scale. तो वो एक gap रह जाता है in this effort of scaling innovations. We can continue to innovation बढ़ाते जाओ, अच्छा make it okay and all that. और एक another aspect जो है is conversations. हम लोग जब community के लोगों से बात करते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी किया है, they will tell you in a language that they are comfortable. So if a scientist has to talk to a grassroots person about science, technology, innovation, the language is very different. So वहाँ पे because we have been with the C division of DST, we know how to talk to local people. But when I see people coming from research institutions, etc., वहाँ पे दिक्कत होती है. People with great scientific brains but not the connect with the community. So that is one more thing जो मुझे लग रहा है कि this kind of a program is bridging that gap. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. You made a very pertinent point that there needs to be bridge a gap between the financial sector and the other sector. But what I would like to ask, are people at the grassroots level, are they ready to take risk if supported financially by the government bodies? Are they willing to take the risk in scaling up their products or having a broader so risk mitigation it does not happen overnight. So what we have seen is that they will see parts, they will use. We need to first establish the willingness to use. Agar log are they wanting to use first? Once you establish willingness to use, then you go to the next step, which is willingness to buy. And that is wahi pe, about if you're having 100 people, who are saying that mujhe ye chahiye, ye product chahiye, ye dryer chahiye, ye chula chahiye, ya jo bhi ho, then how do you make them buy that product? Yes, ma'am. That's the point, ma'am. And what are the existing loopholes from the side of government, ma'am? From the side of government or from the side of administration? See, what are... Okay. Okay, just give me 1 minute. Of course. I'm not able to see that join. I'm getting a signal saying people are waiting, join, but abhi dikh nahi raha hai mujhe. I don't know what you want me to do. Usha, what do you want me to do? Ma'am, if you have some other engagement, it's okay. Okay, 1 or 2 minutes and then I will. नहीं तो ये एक फाइनेंस का ब्रिज गैप ये एक है. Okay, and one last point I would like to make is about Techneev. So
basically, the basis of Techneev is, need मजबूत होनी चाहिए. And I'm just going to say that SNT is the foundation. Science, technology, innovation is the foundation on which we need to build. But for काफी उसके ऊपर काफी बड़ी इमारत करनी है. Thank you, ma'am. Thank you. Now coming over to Jaswant Dadi ji, who's the organizing secretary, Barefoot College. Sir, are you here? Hello. Jaswant Dadi, sir. Ji, am I audible? Yes, sir, you are quite audible. Sir, आपने अभी मैम को भी सुना, स्वाति भोकले मैम को. सर, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि ग्रास रूट लेवल पे जो STI इंटरवेंशन होता है उसमें क्या क्या बॉटल नेक्स हैं सर, उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज हैं जो एज अ साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट भी फेस करता है और लोग फेस करते हैं एट द ग्रास रूट लेवल. I'd like to. जी सर, और इन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है? व्हाट कैन बी डन टू ओवरकम दीज बोटलनेक्स? I think Swati ji had given like a brilliant answer. Yes. Whatever your question, I would just like to add on one thing that so that's where civil society organizations would come into the picture. I would say when we talk about local innovation, facilitating the rural communities to engage better, integrating science and technology to solve local issues is a little difficult when we take it at an individual level. So where civil society organizations like Barefoot College, and there are like very many institutes across India, even in partnership with DST come into the picture is over there, where we try to engage with the communities. We try to listen to what they have to say, take them into confidence, get them into decision making, and with the technical expertise that we have. And Barefoot College as an institution has always believed in the concept of demystifying technology, demystifying innovation. And the best part over here is technology and innovation could be anything. It's so abstract that you define what technology and innovation is. Loopholes is one thing where based on our experience we face is again like Swati ji mentioned, it's the gap in finance. Where if we try to push a public-private model, that's how a non-profit usually runs, where we try to engage, we try to create models for the government to take up, and then through the DST program, we've been able to identify 7 such technologies, grassroots technologies, which should solve local issues that way, where we engage with them, we did a need assessment, we understood what their problems are. We even just like how there were people from the nearby villages in the session, in the second in the first community session. So when we take them on board, I think that would actually bridge a lot of gap between scientists as well as what the grassroots problems exactly are. And when we engage with the technical team who are experts, who could be scientists, who could be experts in science, who could be experts in other technical aspects, that's when a solution could be sustainable on a longer run. And unfortunately, that's something which doesn't happen often. Where we either get a lot of data from the scientists, from the top, which is a top-bottom, top-down approach, or we have like so much of issues that we listen from the other side. So the middle ground is something which is missing, which is where I think and I believe that the civil society organizations could bridge the gap, and through the programs, that's something we would want to also request the government to take it forward. And I think DST, the C division has been like has pioneered that initiative. And when we go forward, when we are trying to implement the projects at the grassroots, whatever came out of the result of our partnership for the past few years, there's been a great response from the community. There's a great response from them to uptake it, maintain it, repair it, because when we try to create decentralized solutions where we train them, then we share the knowledge, is something when they can be self-reliant, when they can be independent. So those are the few aspects which we see
often wouldn't be working in other areas where if it's a government directly dealing with the people, is something that would miss. But through our experience, we felt that that was one of the loopholes which existed in the rural communities for a long time, and which is what we've been trying to bridge. Okay, sir, you must have worked with several communities, and you must share your experiences regarding marketing linkages, sir. There are lack of marketing linkages. We feel that the locals, which products that are produced at the local level, should get a market, should access to the market, which is not present there. So, what can be done to bridge this gap? Yeah, in marketing. Yes. So I would like to reiterate on the few points that I mentioned earlier, is where, when we try to understand the need, I think, that would also involve the market research. Because let's say, we are living in Rajasthan, and if we start growing rice where people don't even eat rice. So that's where you're trying to create a gap where you are, when a person is not understanding what the market's need is, but then trying to create some solution which the market doesn't need. So here, what we believe is, what we understand is the need of the community, and the technologies that we try to develop within the seed division DST program is the products that could be marketable, because that had like a good 1 year time, 6 months to 1 year timeline, where we understood what the problem is, what we can address, and what can the communities benefit from, whatever solutions, local solutions that we could develop, and then the communities could take this forward. And so I feel that a little bit more research to what the community needs are, and that's where the funding also should be concentrated, and because without understanding the need in the local areas, or in the region where we are trying to intervene through an innovation, if something is suggested or proposed, that may work for like a very short period of time, which is like pure misuse of resources in terms of time, and as well as finance. Sir, it would be great if you share few of your or some or one of your experience in which the local products have been made scalable to the level that it is marketable by the interference of the mid-section organizations. Yeah. So one such, I think what would be more relatable is the partnership with the DST program itself. So solar projector that we developed through the seed division's DST support is like it was developed for rural areas, to places where there's electricity has not reached yet, or there's like intermittent electricity where it goes off for like 10 or 12 hours a day. And what came with the COVID pandemic is schools were shut. So these were piloted in a program of Barefoot College itself, which is Solar Digital Night School. So just like I'll take 1 minute for this. Night school is a place where children are enrolled in government schools, but then still are unable to attend it because they have to take care of daily chores. So what we do is instead we try to run schools for them at their own convenience, which is usually in the evenings, so that there would be a bridge education for them. So solar projector, in order to make sure that we introduce digital education in the rural areas, when we thought that there was a need, but why we understood from the community, is when we designed it, and when we with the support of DST, we were able to fabricate a product. So when we tried working out, it had like a great response, not just in the community, but also from the other, because of word of mouth, it obviously spreads to other areas. So and that's when we even try to involve that into the Solar Mamas program. Like, so why was there a success in the Solar Mamas program, and why did it scale to 96 countries? Is because we are giving the knowledge to people where they come from. We are not empowering companies, we are not empowering private players, but rather
rural women who could go back to their communities and take care, so that they don't have to rely whenever there's any emergency. They don't have to call up someone who can wait for days for them to come back and repair it. So after such analysis and need-based assessments, when we develop such a product, it scaled up really well. Now it's being utilized in like 8 states in India, where we have like with various ground partners. So that way we were able to achieve what we not even thought of. We thought of actually only using the funding to probably establish there, but then people like it turned out really well because it was addressing some community needs through innovation. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Now coming to Dr. SVS Fani Kumar. Sir, are you there? Fani, sir? Yes, I'm here. Sir, if you can switch on your video. Yeah, in just a minute, it is coming up. Yeah. Can you see me? Yes, sir. Yes, sir. Oh, yeah. Sir, I would like to ask that there exists a gap between the Knowledge Institute and the people at the grassroots level. Do you think that this gap that is there between the Knowledge Institutes or the research work done at the Knowledge Institute and the grassroots level should be bridged? And if it is to be bridged, how it is to be bridged? What can be done to bridge this gap? I would like to answer the question based on our experience. Of course, sir. At National Institute of Ocean Technology, we are basically research institute, an autonomous body under Ministry of Earth Sciences. But when we say research, we are not into any basic research or anything like that. We start with an application in the sense the research will be oriented to where can I apply this technology. Then we go backwards trying to see. So in the sense, 15 years back, as it was being said in the first session, where we installed the first plant in Kavarati, this Lakshadweep plant. Okay, we had an energy program where we were trying to get energy out of the ocean based on a similar technology, and we had some severe setbacks in the program. So at that level, we had to go through our strategy of what is the technology that we are applying, what is the technology that we are trying to prove, and what are the technologies that we already developed and confident about, okay, and where can we demonstrate. So in that sense, when we, to answer your question, we went back and we tried to see if I want to demonstrate with what I know in a short time. We found that Lakshadweep is one area where if I'm not talking about energy and if I talk about desalination plant, a lot of the technologies that I developed can be easily demonstrated. Kavarati project, from inception to commissioning, we took three months time because most of the components we are in the middle of it. And with that enthusiasm, we developed and we installed there. Okay, that was a big boost for us in the sense that we were able to show water. And the island per se, it is very remote. It takes 1 day, complete night, by ship to come to the mainland. Even bolts and nuts have to come from the mainland only. So the things that we take for granted in the mainland, like a basic crane or heavy lifting equipment, we cannot dream of such things in these remote islands. So we had, in the sense of application and what we are trying to do, we had to go through each and every nut and bolt and how we are going to install it and things like that. With that, we were able to show the project. At the same time, for this project, what we did is 1 year we ran the plant using NIOT manpower. We supplied the water. Then by constructing the plant, we employed local manpower and we trained them. When we came back after 1 year, we were able to transfer the entire plant to the local administration along with the people whom we trained.
Today, after 15 years, the same people whom we trained are maintaining these plants. Okay, that's very interesting. Because that's very interesting. We applied that like we were trying to see from that angle how tomorrow if I complete my research and if I come out and if I prove my my objective, who is going to run this plant? How should I go forward and things like that? And this plant is a multidisciplinary plant. It is not just one area. We were talking about work in ocean. We were talking about some process equipment. We were talking about a huge civil construction, 200 meters of bridge in the middle of the ocean. Okay, and some huge caisson and things like that. It is a multidisciplinary task where we were able to coordinate from all the sides, and luckily we had an administration which was working very enthusiastically with us. Okay, we had two more plants we demonstrated in 2011. Now, based on the success of these plants, all the three plants are being run by local manpower using the local administration. There are some issues during cyclones and things like that. We had to revive the plant because we are working against nature. Okay, but we are able to look at it in the holistic way, and because of that approach and because of the support that we get both from our ministry and the local administration, we were able to maintain these plants. Okay. Sir, what are the challenges that you have faced in maintaining this desalination plant? Like you told that there was cyclone. Yes. So if you can tell us something in brief about it, what happened at that time and how challenging it was. The plant that we are talking about, as I said, it had three components. The first one is marine construction. Okay. Then the challenge in marine construction is that in the remote island, we had to make do with the available equipment and available infrastructure. So we designed it as per the requirements. The second challenge is the two components. One single piece of pipe, 1 kilometer long and half a meter in diameter, and which weighs around 200 tons overall. This has to be deployed in the ocean without any incidents, and it has to withstand the local weather conditions. So in the sense, our challenges are towards designing this both this marine construction and also this long piece of pipe, and also trying to see my design as per the weather conditions that the pipe is actually seeing. Any weather incidents occur, how I can modify with the existing equipment so that with minimal cost. This is a working plant where each island, around 10,000 people, are totally dependent on this water. If you don't, if the plant doesn't run, they don't get water into their house. Okay. We had to implement something that is a fast solution. That means they can get water again in their houses within a short time, and a longer solution where today I'm working on stopgap, but tomorrow I will correct this solution and I will make it permanent. Sir, if you can tell us something about how it has changed the lives of local, in way that it helped in warding off the diseases and the other problems that they were existing due to the underground water that they were using. Yes, these islands are very narrow and long islands. They are coral in nature. Okay, when we have rainfall, because of the coral nature, there is not much ground storage available. People were living for ages in these islands, and they were using the available groundwater. Because of the population and overcrowding, what was happening is the sewage is getting mixed up in these water bodies. Okay, incidence of waterborne diseases is very heavy in these islands. Okay, and one
advantage of this plant is it is as good as mineral water. Okay. And as soon as we install this plant, Kavaratti Island, which used to have somewhere around 200 per year of waterborne diseases, a group of doctors went to this island after 6 months after installing. They reported that local hospital reported only 8 cases of waterborne diseases. Okay, great. Because it shows from the data that the groundwater contamination, people were able to get access to safe drinking water, okay, and they were maintaining on their own. We had 2 more plants in 2011. Right now, we are in the process of installing 6 more plants in to make all the major islands completely dependent on this water. Okay. Sir, as we came to know from the earlier 2 sessions that the making this potable water reach every household through the pipeline is a challenge there. So if you can tell something about it. The main challenge is in a bigger community where some 1 lakh people stay. Okay, if I install a capital equipment and if I want to run it for 25 years, because we are running the capital equipment for 25 years, the capital cost will get divided and per capita cost of the water will come down. Okay. Here, the population is only 10,000. The maximum population in one of the islands is around 12,000. The minimum is around 3,000 to 4,000. These islands are very remote and they face a severe water problem. So the issue is in 1980s, later 80s, all these islands were installed with reverse osmosis plants. Okay. But because of the remoteness, these reverse osmosis plants have to run directly with the seawater, and any sand particle will clog the membranes, and there were huge problems with maintenance. Okay. The advantage of these plants is that the maintenance is very low. Local population can maintain it, and we were able to establish a model where they were doing the maintenance. Okay, so because of that, lot of administrative and maintenance related issues have come down. The main challenge for the islands is the cost of the plant if we have to scale it up. Okay. Like per capita of water, if we have to maintain 140 liters per capita, okay, we have to be thinking about somewhere around 1 MLD, 1 million liters per day plant, which will go all the way up to 100 crores in these plants, in these islands, okay, which for the population, the capital cost per liter will work out enormous. It is very, we have to see how that water can be supported using other means. Sir, is it so that the water that is being generated there, potable water that is being generated there, is devoid of minerals, and there is a need to add minerals in it? And is it so, as we came to know in the earlier sessions? Normally, when we have groundwater, okay, as per drinking water standards, the maximum total dissolved solids that can be accepted for potable water is around 2000 ppm. Permissible is around 500 ppm. Anything below 500 is acceptable. The plant water that we generate hovers around 100 ppm to 180 ppm. If you see major municipal supplies in and around the country, normally during rainy season, the water that is pumped from the rivers will be pumped at 60 ppm, say 60 parts per million. Okay, which is very soft. When you bath with this water, soap will not go away. Okay, so usually for the PWD, what they do is they add remineralization plants in these plants in the metro cities.
it is a minor component. We are in the process of establishing these plants so that around 200 to 500 can be maintained in terms of salts. Okay, that is a minor component. And drinking water standards as per se, there is no minimum in the drinking water. Like we have to supply water above this level only. That level is not there. Still, we try to maintain some level, and we are in the process of establishing this remineralization plants. So we are really thankful for your valuable insights and for the knowledge that you have given us. And now coming to Dr. K. Sumati. Ma'am, are you there? Dr. K. Ma'am, you are not visible. If you can switch on your video. Can you see me now? Yeah, ma'am. Namaste. Namaste. Ma'am, as we were discussing in the last two sessions, you told that not everybody gets the FSSAI approval, and hence this hub and spoke model that you talked about. Could you please elaborate what is this hub and spoke model? I'm glad you picked it up because this is something we also want to discuss. What we have understood during our interaction with the community is that typically many of these NGO projects, we try to look for somebody who can really scale things and show a big impact. Sometimes it has an adverse effect that certain people will be monopolizing this. And it can also happen because of certain other reasons like caste, we cannot avoid this in rural India. So some of the powerful women may want to dominate, and there you will find that we are not able to reach everybody. This happens because we take a very individual enterprise kind of an approach. So to encourage every woman who wants to do something based on her own aspiration. For somebody, the income goal may be 10,000 rupees per month. For somebody else, it could be 3,000 rupees per month, which is fine. We should not be judging that. Is our one of our first this thing. But provide the opportunities for that person. You just connect them with the right person and take it ahead. So we had experimented with a couple of things to encourage every such small, micro, or even you can use the term nano, even smaller than micro entrepreneur to do something. But what happens is because of the sheer scale of the operations, for something to be successful, you need a particular scale to spend on marketing, to spend on, say, transportation, or like I said, to even get an FSSAI. So we have 2-3 options here to aggregate the produce and then look at these things by ensuring the volume. So this is where tried with the hub and spoke model, where you say that there are spokes who are slightly smaller scale operators, but they're all following the same protocol. And then this hub is the controlling center. Actually, if you think about it, it's nothing very new. Lijat Papad had done it. Certain other people had also done it. Just that we are trying to take it to various other interventions also. And what we realized was initially we said, okay, WTP can be the hub. At least for certain things, we still are keeping WTP and our Manini self-help group as the hub. So what you will see is that it will remove a lot of constraints. So for example, if you talk to some of the women who are contributing, they are not official members of Manini, but Manini is an inclusive setup. So they supply to Manini and Manini markets it for them. This happened during COVID, where there was a lot of demand for masks. So suddenly the state SRLM and also the Bangalore LCTA, the Electronic City Association, wanted some thousands of masks. So since we had a network, we procured from the women, they gave to Manini and they supplied. So this hub works very well in those situations. And recently we are also experimenting with individual entrepreneurs acting as aggregators and as a sort of a hub to overcome this limitation on things like FSSAI. So this person has a setup, has the scale, but we work with them
motivating them to work with small scale producers, not to monopolize, not to say that, I will only produce everything. You work with small producers, you pick up from them in your own village, and you pay them the fare. In fact, we have given them, even for this ragi products, we give them the rate card saying that you should pay so much to get it from them. And then you do the testing, and you are free to reject. You set up high protocol, QA checking and all of that, but on fair principles, just say that this today it was different size or it did not taste properly. Set up objective protocol and then you take it through. So in this process, everybody wins. The smallest woman also gets her money. The scale is achieved, therefore the operation becomes economical. So instead of selling, say, some 10 kg of malt, suddenly you are selling 500 kg of malt, because you have procured the malt from so many women. So this is the hub and spoke model that we are trying to work out. In fact, recently we have made an application to this Furti also, proposing this millet cluster model, having the same idea that there will be minimum 300 artisans who will come together and scale of operation will be there. Because big problem we also face is that in marketing, if you go with small volumes, people suddenly will say, how much can you give? And they are talking about tons, you're talking about kg, and then it will fall off. But then for SHGs to come to that scale is also challenging. That is why we are exploring this hub and spoke model. Ma'am, talking from the point of view of women who are venturing into these different enterprises, what are the constraints in scaling up their products? Yeah. So one of the thing we are seeing is a little bit about the financial and the marketing models that Swati and I think Mr. Jaswant spoke from Barefoot. The whole ecosystem on financing and marketing has to, I think, evolve. I will give you one example where we are struggling today, which will tell you, what we are looking at. The SHG, as you know, or I hope I'm not wrong here, it is an association of persons. So the proof for an SHG today is something like a bank account or an FSSA that you hold. Otherwise, it is not like a society or a trust that we can go and register. So given that concept, today we are not able to get a GPay for an SHG. So there is an e-commerce. We could not get the SHG go through the KYC with a famous, with a very popular e-commerce site where we have integrated type. Therefore, we looked at GPay. GPay also did not happen with the current bank account where the SHG was registered. So we are now talking to another bank. It is now almost third or fourth month. We still haven't got it. So what happens is that a woman, for example, if she suddenly is scaling and she wants to sell directly, and let's say she finds a good client in Bangalore, so she's receiving WhatsApp order, she's ready to send. How will you receive the payment? The GPay would have made it very easy. So these kind of challenges are there as an SHG entity. Certain financial instruments, certain protocols are still not mature today in this area. We have, of course, but people are very receptive. We spoke to NABARD also. NABARD has taken this very seriously and they said that we are a bank, we should be able to help you out in this. But we are understanding some of these challenges. That is one thing. And from the individual women's point of view, we have understood that for most women, they need a flexible, preferably home-based option. They can come for training, they can come to procure or give or something like that, but they will want something closer home. And since WTPs are usually remote, we have understood that WTP cannot be the production center for everybody. That is why we went on to the home-based production model. And therefore, protocols are very important, and ensuring that they follow, especially for food products. And that comes over a period of time, and they have to understand that and abide by that. And some of the families are also thinking of the risk, tomorrow something happens, what do we do? So that is a journey that we have to take them through. And other than this, what I will say is financial knowledge. Like, for example, filing your income tax if the woman is by herself, ensuring that, say, GST, whatever is there, how she can make use of that. That knowledge also has to come. While SNT people, we have tried to integrate them. I think there is still a little bit more we can do. We are constantly talking to other people.
In this regard, I have to thank DST because we have a wonderful set of core partners where we exchange a lot of information. So what people try in one place, we share with others, and we replicate that model. And a lot of ideas have got exchanged there. And there is a forum, there is a website, DST Tara website, where you can see, and we keep exchanging this. So it's a constant learning and a good interaction. So I would say that we fail and then we go look for solution, then we adopt it, then we become successful, then we go and share with others. So it's a constantly evolving journey. That's what we are saying. Ma'am, during your long and illustrious career in the field, you must have worked closely with several women at the grassroots level. Can you cite some or few examples where women are really empowered in the way? Yes. So I have one example where there was this woman, her name is Katyayani, and she was an uneducated woman in the sense she studied till 6th grade or so. And our first introduction to Tide and Katyayani happened sometime in the 2005 to 2010, in that time, I think 2008 to 2010 time period, when we were doing a Sarla stove builder construction program. As you may be knowing, Tide has been disseminating a very popular cook stove program called Sarla Stove, which is also a livelihood program for rural women. So Kartiyani's village, we did the program, and she hesitatingly came forward. At that time, she was struggling because her husband was a farm laborer, and she had 2 children, and she would go and do work as and when possible, and she wanted to give good life to her children. So she started becoming, she got trained as a stove builder, and slowly she started making money. So why I'm quoting her example is that she went through multiple challenges and she overcame them. The very first thing was the acceptance from the family, because this was a question you asked before. With the Manini women today, it was not a big challenge because Tide has been working in that area for now more than a decade. People have know it's a safe place to send, they are sending. But when Kartiyani started for stove, you have to go to remote villages and go to some stranger's house and construct the stove. So, her husband suddenly said, no, you can't go. Then Tide people went and spoke to her husband, and then for some time he was accompanying her, actually. Very sweetly, he was accompanying her, leaving the children with their in-laws. But then slowly he started getting the confidence, and then she started going. And Katyayani grew, constructed many stoves, and slowly she was surprised, she told us, to find that people were looking up to her. Here was a woman who was just 6th grade, but then she found that people were asking her, how are you coming alone? You're staying overnight also in a place which is not your home. How are you managing? So those kind of conversations started, and she became very, very motivated and very inspired. So she became the master trainer. So she has traveled today to a lot of states in India. She has gone to Gulbarga University and given a guest lecture. She has gone to Chhattisgarh, and she had trained some women without knowing one word of Hindi. I think they gelled well. There was a translator, but she managed that. And and of course, financially, she did a lot of things. Some money came her way, and with this experience, she became part of various other projects. Started a low carbon project, selling solar products in her village. A lot of things she started, and she was paid as a master trainer also through various projects. She was certified with Karnataka's Hasiru program, which was doing the tree plantation in forest fringe areas. So she got very good payment through the government scheme itself. So her children actually graduated. In fact, in one of the seminars, her daughter spoke about how her mother's stove journey empowered her also. Not only her mother, but her also to become a graduate, and she's now living in Bangalore. But the feather on the cap came for Katyayani first with her nomination to the temple committee in the village. While she was doing all of this, she was not from the higher caste, and they were not really being recognized. So first time she got nominated for the temple committee, which is a big thing in rural India. That happened sometime in 2016. And 2018, she also became a Gram Panchayat ward member. So I think while it started with initially with the economic empowerment, then slowly it became a social empowerment. First through recognition of her among her peers, but then later through recognition of her in the
circles like, the Gram Panchayat, and even in the now today, if you go to that village, SRLM will call her for function, NABARD will call her as a resource person. So somebody who is a 6th grade person and who started like this, getting invited as a chief guest and being asked to interact with officials is a journey that she's gone through. So we usually request her to share her journey with other women because it is possible. And I think today also we had the opportunity to meet some of the other women. I'm sure they're all on that journey, and it's very inspiring for us. We are all educated. It's a different thing, but for them the challenges are many more, and they have overcome all of that. So that is what motivates all of us. We are really thankful to you, ma'am, for sharing your experience with us. Thank you so much for the We hope that there are many other women who needs to be empowered. Tens of thousands of women need to get empowered, and they will get empowered through science and technology. Now coming over to Kamlesh Best ji. Sir. Kamlesh Best sir. जी नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। सर आपका वीडियो ऑन कर लीजिए आप प्लीज। जी वीडियो ऑन है सर। हाँ जी सर नमस्कार। सर हम जैसे बात कर रहे थे नॉलेज इंस्टीट्यूट्स की और ग्रास रूट इनोवेशंस की, तो नॉलेज इंस्टीट्यूट से जो इनोवेशन होता है वो तो ग्रास रूट तक पहुंचता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो आम आदमी इनोवेट करता है उसको स्केल अप करने की जरूरत है, और जो हमारे नॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं वो उन इनोवेशन को टेकअप करें और उनको स्केल अप करें और मार्केट तक पहुंचाएं? क्या इसकी जरूरत है? जी बिल्कुल सर, इसकी जरूरत है। जहां तक अगर मैं बात करूं सर, हम लोग रूरल कम्युनिटी और बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और बहुत सारे सेक्टर उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे चीजों से सहायता करते हैं, लेकिन सर गैप जैसे रहता है ना, एक चीज में वो टेक्निकली बताता हूँ कि सपोज सर एसएचजी ग्रुप हैं, वो कोई फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको लाइसेंस के लिए फिर भी वो गैप रह जाता है। कोई रूरल कम्युनिटी में कुछ इनोवेशन हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने इनोवेशन कर लिया, फिर भी हमें एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, उसकी ब्रांडिंग की जरूरत होती है, और वो सर हम आगे तक नहीं लेके जाते हैं क्योंकि वो गैप वो चीज रह जाता है। तो आई थिंक सर मेरे को लगता है कि उस गैप को अगर हम लोग फिल करें तो एक अच्छा इनोवेशन और एक अच्छा सशक्तिकरण जो हम बात करते हैं वो मतलब हो सकता है। तो कमलेश जी आप हमें बताइए कि उस गैप को ब्रिज करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है गवर्नमेंट के लेवल पे या संस्थाओं के लेवल पे या खुद कम्युनिटी लेवल पे लोग क्या क्या कर सकते हैं? ओके, तो सर जैसे मैं बात कर रहा था एक सर्टिफिकेशन की, एक पैरामीटर सेट कर लिया जाता है सर, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसको पूरा अप्लाई करना होता है। जो ब्लेज लेवल में हम लोग सशक्त नहीं होते, तो अगर वो गैप अगर नहीं रहे तो हम आसानी से सशक्त बन सकते हैं सर। ओके, तो सर्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम है जैसे आपने बताया। जी, ब्रांडिंग, सर्टिफिकेशन और जी। ओके, तो जो ये इनोवेशन होते हैं इनका सस्टेनेबल होना भी जरूरी है, लंबे समय तक ये टिके रहें। इसके लिए इन इनोवेशनों को कैसी मदद चाहिए होती है सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से कि इनकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे? ये भी एक बहुत जरूरी चीज है, आयाम है, एक बहुत जरूरी आयाम है ये। राइट सर, जैसे कि सर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं क्योंकि पिछले 8 साल से सर गांव में प्रैक्टिकली वर्क कर रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बातें करूंगा सर। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत सारे ऐसे सेक्टरों से गांव में बहुत सारी टेक्नोलॉजी को दिया गया। सपोज सोलर में ले लूं मैं सर, हजारों में स्ट्रीट लाइट है, बट सर वो 1 साल के बाद 6 मंथ के बाद वो रिपेयर ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर हम लोग उसको एक टेंडर के थ्रू किसी कंपनी को दे देते हैं और कंपनी वाले आके उसको पूरा सिस्टम लगा देते हैं, लेकिन हमने किसी को सिखाया ही नहीं। हमने उस ब्लेज में किसी को ऐसा ट्रेनिंग ही नहीं दिया ताकि वो खराब होने पर उसका रिपेयर और मेंटेनेंस कर पाए। आई थिंक सर ये गैप भी अगर क्लियर कर पाए तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा। जैसा कि हमने लक्षद्वीप वाले केस में, आप थे सेशन में सुन रहे होंगे, उन्होंने बताया कि हमने कम्युनिटी के लोगों को मेंटेनेंस में लगा दिया पाइपलाइन की और वाटर की, जिसके कारण वो तो ऐसा कुछ करने की जरूरत है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, तो कमलेश जी आपने तो बहुत गांव ग्राम में काम किया होगा, दूरस्थ इलाकों में काम किया होगा, तो वहाँ किस तरह की प्रॉब्लम आती हैं लोगों को? साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो ग्रामीण है, एक जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इन चीजों को अडॉप्ट करने में किस तरह की प्रॉब्लम या अड़चनें आती हैं? ये सर आई थिंक सर एक्चुअल में अगर हम लोग किसी
लोकेशन में या किसी ब्लेज में या किसी राज्य में अगर काम करते हैं तो एक्चुअल में हमें वहाँ एक सबसे पहले सर एक बेसलाइन सर्वे होना बहुत जरूरी है कि लोगों को एक्चुअल में किस चीज की जरूरत है। सर हम कोई चीज उनको बाहर से लेके उनके ऊपर थोप देते हैं कि आपको ऐसा करना है, बट एक्चुअल में हम लोग ये नहीं मानते कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सर वो गैप वो चीज रहता है कि ताकि हम उनको दे देते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, और आगे जाके वो पूरा प्रोसेस सर फेल होता है। फिर एक नया प्रोग्राम चलता है, वो उसको फिर से शुरुआत करता है, और तो ऐसे करके चलता रहता है सर। हम कभी उस चीज के बारे में बहुत गहराई तक जाके पहले बुनियादी तौर पे जाके तब काम नहीं करते हैं। हम कुछ उनको प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद फिर उसके बुनियादी तौर पर जाते हैं सर। इसी क्रम में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो लोकल लेवल इनोवेशन होते हैं, जो वो लोग अपने लेवल पे करते हैं बिना नॉलेज इंस्टीट्यूट्स के हेल्प के, वो नीड बेस्ड होते हैं, वो अपनी जरूरतों को हिसाब में रख के ही करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे इनोवेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए? सर एक चीज है कि अगर हमारे ब्लेज में अगर किसी कम्युनिटी में 10 चीजें हैं तो 10 में से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिनको हम लोग अडॉप्ट करें, जिनको हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो 10 के 10 चीजों को सर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजों को भी देखना जरूरी है। एटलीस्ट 10 में से वो 2 चीजें ऐसा, 2 इनोवेशन ऐसा होगा जो आगे जाके और भी बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे गाँव में या शहर में वो काम कर सकता है। बट वो एक गैप रह जाता है सर कि उसको कैसे करें। किन्हीं एक दो ऐसे इनोवेशंस का उदाहरण आप दे सकते हैं हमें? जी बिल्कुल सर, हमारे पास में हम लोग सोलर टेक्नोलॉजी में सर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। सो अभी तक का क्या था सर, जैसे कि इससे पहले हमारे फर्स्ट वाले सेशन में बात हुआ, उसके बाद में जो हमारे एक मेकर हैं उन्होंने बात किया, लेकिन सर उस चीज को अगर हम उस तरीके से देखें, सपोज अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया और हम उसको गांव तक लेके गए, और गांव और हमारे बीच का जो गैप है वो कहाँ पे आ रहा है, उस चीज पे भी अगर हम लोग ध्यान दें तो जरूर हम लोग सक्षम हो सकते हैं। हम जब अब एक चीज में इसमें और जोड़ना चाहूंगा सर, हम जब बोलते हैं ना आत्मनिर्भर बनना, तो आत्मनिर्भर हम जरूर सर, हमें सारी चीज दिया जाता है, बट वो एक बीच में गैप डाल दिया जाता है जिससे हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। तो आपको लगता है कि वो गैप को ब्रिज करने की जरूरत है? फील करने की जरूरत है सर, बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। एंड विद नाउ आई कम टू द थैंक यू। नाउ आई कम टू द फाइनल कमेंट्स। I would seek final comments from our esteemed members. तो जसवंत डाडी जी आप हैं यहाँ? Yes. Like, are you audible? Yes sir, you are audible, but you are not visible. जी सर, तो इन्होंने जैसा कि बताया अभी कमलेश जी ने कि उस गैप को ब्रिज करने की जरूरत है, इसमें वी वुड लाइक टू नो योर फाइनल कमेंट्स की कैसे ये गैप कैसे ब्रिज किया जा सकता है? जी, like I mentioned earlier, I think the way to go is the public-private partnership. तो यहाँ पे मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही रोल रहेगा कि हाउ डू वी क्रिएट मॉडल्स फॉर द गवर्नमेंट टू टेक इट अप, उनको अपने सिस्टम में कैसे अपनाए है। And then at the same time, there is so many research organizations, there are so many companies under their CSR grants, who support the work done by civil society. So we can tap on, all these sort of opportunities like that. And then if government could also roll out any such models where the focus would shift to rural grassroots innovation in collaboration with civil society, I think that would give a lot of scope for science and technology improvement at the local level. तो हमें शायद मतलब बड़े साइंटिस्ट के पीछे या बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ना भागना पड़े, but then rather the knowledge stays in the village, the innovation stays in the village, and that will only be used for address the local issues, which is sustainable as well as on a long term it will run effectively. Okay, thank you sir. Now coming over to Dr. Fani Kumar. Dr. Fani. Dr. Fani. Yes. सर आप वीडियो ऑन कर लें। Now it's visible. Sir, Dr. Fani, we would like to know your comments on how to bridge the gap. जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कमलेश बिस्ट जी ने बताया, जो जसवंत नाडी जी ने जिस पे बताया कि there is a existing gap between
the knowledge institutes and what is being researched at the ground, और जो लोगों की requirement है ground पे और knowledge institute जो produce कर रहे हैं, तो what is the way to bridge this gap? इसको कैसे हम fill कर सकते हैं इस gap? हमारे experience से, from our experience, what we observe is NIOT has been working in some of similar areas, like we are working on fish cage technology, where coastal villages can install something and grow fish in that area. Okay, so the technology should be in such a way that a community, if they come up, they will be able to generate their own income, and they will be able to sustain it. For that, initial money has to be there, where a research organization can go hand in hand with people, like some of the programs that village electrification that you are talking about. They follow the same principles. There is a community, there is an organization which is the backbone of the entire program. They are hand-holding some people so that they can be taken forward. And there is a mechanism that is being established. And based on this technology, based on this model, if there are other centers that come up and or some other organizations that come up and take this technology model forward, the entrepreneurship in people will increase a little bit, and there could be a lot of villages there that may need some of these solutions. The organizations that were working concentrated on few villages, and they were able to take it forward. As an organization, how many villages can you take it forward? It should be in how we can, how the environment can be sustained, and how people can come forward and take it forward. There could be some issues. They have to be handled as they come along. Okay. It should be a 50-50 effort from the persons who are taking it, and also from the persons who are doing it. So unless both come forward, it will not be possible to take it forward. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable comments. Now coming to Dr. K. Sumati, ma'am. Sumati, ma'am. Ma'am left. Okay. So with this, we came to the conclusion of day 6 of the Techneev. We are really thankful to all our esteemed members for their valuable insights. We thank organizers for giving us the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.